Ajay ji, shall we start? Sir, yes, you can go ahead. Good afternoon, everyone. Indian Nursery Association presents Seeds for Future वेबिनार सीरीज में मैं सचिन राममणकर आप सभी का इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन की ओर से स्वागत करता हूं। वेबिनार जो सीरीज चल रही है, इट्स अ कंटिन्यूअस सीरीज फॉर ऑल द नर्सरीमैन स्टूडेंट्स एंड द पर्सन हु आर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ आज हमारे मुकेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। मुकेश शर्मा जी इज अ वेरी पैशनेट एंड डेडिकेटेड पर्सन इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड नर्सरी। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कहने में कि इंडियन नर्सरी एसोसिएशन की ये अभी ट्रेजरर बन चुके हैं। सो आई विल कॉन्ग्रेचुलेट हिम। तो कॉन्ग्रेचुलेट मुकेश शर्मा सर, और आईने में आपका स्वागत है। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने बारे इंडियन नर्सरी एसोसिएशन की और उनके जो एक्टिविटीज उसमें दो अपने शब्द के उसके पहले में हमारे जो आईने के सेक्रेटरी है मुकुल त्यागी साहब, हमारे जो एडवाइजर है इंडियन नर्सरी एसोसिएशन के श्री राकेश श्रीवास्तव सर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। उसी के साथ साथ हमारे जो आज के स्पीकर जुड़े हुए हैं उन स्पीकर्स का स्वागत करता हूँ। जो भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ स्पीकर के स्वरूप में डॉक्टर अखिलेश कुमार जुड़े हुए, फाउंडर एडन हॉर्टिकल्चर सर्विसेज, डॉक्टर पुरुषोत्तम देवांग, फाउंडर एमडी एंड चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर क्रॉप जीवन एग्रो रिसर्च डेवलपमेंट। उसी के साथ गिरीशभाई पटेल, मैनेजिंग डायरेक्टर अल्पगिरी सीड्स साइंस प्राइवेट लिमिटेड जुड़े हुए हैं। इन सभी का मैं इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन के ओर से स्वागत करता हूँ। और वाईपी साहब का हम हमेशा शुक्रगुजार है कि उनके मार्गदर्शन में ये वेबिनार सीरीज चल रही है। और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हमारे साथ मुकेश शर्मा सर भी जुड़े। नाउ ही इज द ट्रेजरर फॉर इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन। सो नाउ आई रिक्वेस्ट हिम, मुकेश शर्मा, टू स्पीक सम few words. Over to you, मुकेश शर्मा सर। थैंक यू ब्रह्मा जी। मैं मुकेश शर्मा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आईएनए के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, और जितना भी मेरे सोर्स हैं या मेरा पूरी एफर्ट रहेंगे कि मैं आईएनए के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आईएनए की सेवा कर सकूं। तो मेरी तरफ से सभी लोगों को नमस्कार है, थैंकफुल है। अगर किसी को भी मेरे से जो भी अगर है क्वेरी है या कुछ है तो पूछ सकते हैं, और मैं आईएनए के लिए फिर ऑनेस्टली काम करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मुकेश सर। और आपके सहयोग से त्यागी साहब का सहयोग है, और वाईपी साहब का जो भी एसोसिएशन के लिए जो भी इच्छा है वो सभी हमको इस तरह से आगे लेके जानी, और सभी के सहयोग से आईएनए के सभी मेंबर सभी के साथ से आगे बढ़ रही है एसोसिएशन। सो थैंक्स टू यू, थैंक यू वेरी मच। नाउ टुडे वी हैव अ टॉपिक ऑफ इज Soilless cultivation, the hydroponic system, chapter 2। उसके बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं इंडियन नर्सरी एसोसिएशन की जो भी एक्टिविटी चल रही है उसका जो लेखा जोखा है वो आपके सामने सभी पार्टिसिपेंट के सामने प्रेजेंट करने के लिए हमारे मंजीत सिंह जी विशाल जी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मंजीत जी कैन यू गिव द प्रेजेंटेशन फॉर आईएनए। ओवर टू यू मंजीत जी। Thank you, Sachin sir. Sachin sir, my screen is visible to you? Yeah, your screen is visible. Okay. Okay. Thank you, Sachin sir, and I, on behalf of Indian Nurseryman Association, welcome all the participants on board today.
Before starting my presentation, I'll like to mention that please keep your mic off for all the participants because it brings the disturbance for the other speakers to deliver the talk. So I, on behalf of Indian Nurseryman Association, welcome all the participants, our speakers, and the sponsors on board today. And a special mention to our General Secretary, Mukul Tyagi sir, who is present there with us in the office. Our newly elected Treasurer, Shri Mukesh Sharma sir, and Advisor, Rakesh Srivastav sir, who all are present today with us in the office. As we all know that the Indian Nurseryman Association was founded in the year 1987, and since then we call it as the Green Journey of Indian Nurseryman Association. Uh, before starting the activity details of Indian Nurseryman Association, I'd like to mention the contribution of our founding president, Sri Arjun Das Agrawal sir, who founded the Indian Nurseryman Association in the year 1987 from a very small place called Patel in Haryana. And from there, the journey of Indian Nurseryman Association has started. This is the leadership board of Indian Nurseryman Association, founded by our first president, founding president, Sri Arjun Das Agrawal in the year 1987, and he took the charge of the president till the year 1995. Now we have the 9th president of Indian Nurseryman Association, Shri YP Singh ji, on board now. So he was elected as the president on 8th of September 2019, and he is the 9th president of Indian Nurseryman Association. YP Singh basically hails from Delhi, and he owns the North India's largest nursery called Greenways Nursery. Mr. Singh is very much instrumental in taking Indian Nurseryman Association altogether to a very different height. And why we are calling that we are going global now. So I'll be talking about that in the later slides. If we talk about the current leadership board of Indian Nurseryman Association, we have representation of 11 members as the governing council board. And if we look at the diversity of the representation, we have the representation from all over India. President Mr. Singh ji is from Delhi, Vice President is from Uttar Pradesh, General Secretary sir is from Uttar Pradesh, and so on. We have representation from Chhattisgarh, West Bengal, Tamil Nadu, and so on. So the representation of all India, all cultures from different places, and is present in our current GC board. Apart from our members, there are so many eminent personalities who are supporting the ethos of Indian Nurseryman Association, whether we call Talir Mehndi Sahab or VM Singh Sahab. So these people are there to support the objectives and aims of Indian Nurseryman Association from their personal capacities. And this, the Green Ambassadors list is going much bigger now. We have more people on board now. We are still awaiting their confirmation in written so that we can use their profile. The sapling which was planted in the year 1987 is now taking a shape. Now we are a family of more than 3,700 lifetime members and a network of more than 2 lakh people connected together, where they are representing different kind of a stakeholder group, whether they are from the landscape or the forest industry, plant breeder, greenhouse, the nursery growers, retailers, distributors, and so on, the different kind of stakeholders from the academical background, whether they are students, educators, researchers, or manufacturers on board. Indian Nurseryman Association basically work on 5 thematic guiding principles. Being the pan-India body of all Indian nursery representation, the first and the foremost responsibility of Indian Nurseryman Association is to be the influential advocates. So we do the advocacy at the national, at the state level, whensoever it is required. We are the authoritative educators, just for not for our members, for all the other stakeholders from the industry. The third objective on which we work basically is to bring all these stakeholders from the industry at one place. Basically, we deal with the approach of having collaborative across all the industry. Then definitely at the end, what we support is to be the permanent supporter of the plant business, and whatever activities we keep on doing, it ends with the healthy and the green community. So these are the 5 thematic guiding principle of Indian Nurseryman Association. I'll not take much time about talking about the organizational structure, because we all are aware that Indian Nurseryman Association basically work on 4 paradigmical structure representing the national by our National General Council, and then we have the zonal, state, and the mandal chapters. One thing which is in the pipeline right now, which is we are in the process of designing the National Working Committee, where the people who are also not the member of Indian Nurseryman Association but are very much keen to be there on board with us, they can get the chance to work with us under the National Working Committee. INA basically work on 6 thematic areas. The first is the PR and the advocacy. The second is the networking and partnership, capacity building and research, study tours, publication and papers, events and exhibitions, research, and the development part.
If we talk about the PR thing, I'll give you an example that we all are aware that what Indian Nurseryman Association contributed during the COVID-19 pandemic time, when Shri YP Singh ji took the initiative and he spoke with the Ministry of Home and Ministry of Agriculture, and then he made it possible that the plant was considered under the essential item category at such a short notice that time during when the lockdown was imposed at the national level. Or the other, on the other side, when the Nursery Act was proposed by the government of India, that time also they took the initiative and had the advocacy at the national level in registering their voice, whatever things are not good for the nursery people across India. Mr. YP Singh and the current GC board is very much active while doing the advocacy with the National Horticulture Board, whether it is by the Confederation of Indian Horticulture, which was not being functional for the last so many years, or whether to establish the Flowers and the Export Council of India, which is a separate entity planned by the government of India under the Ministry of Agriculture, apart from APIDA structure, which will help all the growers from India to do the free marketing with the Gulf and the SAARC countries. If we talk about the national networking and the partnership, now Indian Nurseryman Association is going global. Apart from India, now our membership is in Japan, Vietnam, Lebanon, South Africa, Netherlands, Italy, Colombia, Bangladesh, and so on. Recently, we had the confirmation from Ireland and Australia as well. So now we are going global, and I'm very much sure now the pandemic disaster is over. So very soon we'll have our focal or the nodal offices in these countries where we can actually look forward at how we can bring the knowledge exchange and everything. The membership drive of Indian Nurseryman Association is open. If anybody is interested to be the part of the Indian Nurseryman Association, they can feel free to call us or write us, or they can actually download our membership form from the website indiannurseryman.com/membership. INA is also into the publications. INA publishes its monthly magazine, Nursery Today, every month, which is an international standard magazine covering more than four stakeholders of the industry all together at one place. So the e-copy of the magazine is available at our website, indiannurseryman.com/magazine. If anybody is interested in getting the copy of hard copy, they can feel free to write us or call us. The contact details I'll be sharing at the later slide. Also, INA published its directory, which comes every 3 years. So the last directory, which was published in the year 2017-18, the third edition of the directory is in process. I think within a year, the directory will be shared with all the eminent members of Indian Nurseryman Association. Under the capacity building and the study tours, we keep on doing so many activities, conferences, webinars, workshops, seminars. And since COVID, we are into the webinar series. I think INA is only one of those few organizations who is continuously putting up the webinar every Saturday. And I think we crossed the mark of 35 webinars as of date now, which is like an achievement, which is very few of the organizations are conducting this. And he's also in the process of designing a very innovative project called iLab, which is basically Seed for Future iLab for horticulture innovation and learnings. Details about this iLab will be on the public website. I'll just be sharing the link to it at the later slide. Manjit ji? So now can you hear me? Yeah, I can hear you. Just show your presentation. Presentation is not visible. The internet connection has gone No, out. you can continue your presentation. You can see my screen now. Yeah, I can see your screen. Okay, so under the events and the exhibitions, we all are aware that Indian Nurseryman Association was pioneer in bringing HortiPro India, which was the India's largest exhibition, which happened in Pune in 2018 and 19. And the third edition of the HortiPro will be announced very soon. Because of the pandemic thing, we were not able to do it. And is also the organizing partner with Delhi government for the Delhi Tourism Garden Festival, which happens every year in Delhi. And apart from all the regular activities, as far as the social responsibility of INA is there, we keep on doing fundraising activities to support the other kind of things which happened across the country. For the COVID-19 pandemic time also, we raised a sum of approximately rupees 50 lakh rupees and contributed it to the Prime Minister Relief Care Fund. And when the Kerala flood was there in the year 2019, that time also, we raised a sum of rupees 25 lakh rupees in less than a 30 days time and contributed it to the Chief Minister's Relief Fund in Kerala. And that is all from my side, Sachin sir. And in the later slide, I'll just be sharing the, is interested to write us or call us, they can feel free to call us so that we can help them out.
Thank you, Manjit ji. Thank you very much for very nice presentation. जैसे आप मंजित जी ने अभी अपने स्पीच थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में कहा कि ये हमारा मोर देन 35th वेबिनार सीरीज है, तो आईने इज टेकिंग एफर्ट्स, उसके साथ साथ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है उनका जो रिस्पांस है, सो दिस क्रेडिट गोज टू आवर पार्टिसिपेंट्स, दोज हु आर रिस्पॉन्डिंग अस एंड creating motivation for us for INA team. So thanks to participant also. और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन सॉइललेस कल्टीवेशन द हाइड्रोपोनिक सिस्टम चैप्टर 2. सभी पार्टिसिपेंट से जो रिस्पांस आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, उससे जो हमको देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, उस हिसाब से वी आर प्लानिंग टू अरेंज दिस वेबिनार सीरीज. और इसमें हमारे चटर्जी साहब बहुत बड़ी मेहनत ले रहे हैं. तो सॉइललेस कल्टीवेशन का इंपॉर्टेंस देखते हुए वी आर वर्किंग टेकिंग दिस चैप्टर 2. तो आज के इस वेबिनार में हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट लोग जुड़े हुए, जो आज के हमारे एक्सपर्ट्स है, जो स्पीकर्स है. उसमें आज हमारे साथ पुरुषोत्तम देवरांग सब जुड़े हैं. डॉक्टर पुरुषोत्तम देवरांग, ही इज अ फाउंडर, एमडी एंड चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर, क्रॉप जीवन एग्रो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड. He is a board member of North Maharashtra University for Research. He is into teaching at Acharya Institute, Bangalore. He has published many journals and medicinal, pharmaceutical, and biomedicinal. So today we have a great personality with us, Dr. Purushottam Dewang sir. So I welcome him on behalf of Indian Nurseryman Association, and I request him to give his presentation. So over to you, Dr. Purushottam sir. Thank you very much, sir, for introducing. And I will like to confirm before I begin my further talk whether I am audible to all the participants in this tone, or shall I be louder? You're audible, sir. You can continue. I'm audible, and yes, I will continue in the same tone then. Sure, sir. Thank you very much. So today I will thank this very important association of Indian Nurseryman Association to invite me from Crop Jeevan Agro Research and Development Private Limited to speak on to the soilless cultivation hydroponic system. I will be contributing to this important discussion on in the aspect of nutrient deficiencies, which is a very important aspect of managing the healthy crop in hydroponic system. So let us begin with this talk, and let us move on to the slides. Let us have an overlook what today we are going to discuss and what today we are going to learn. My effort will be that at least you should be able to understand some of the very important aspects of this nutrient deficiency in hydroponics after today's lecture. First thing that we will understand, see, hydro deficiencies need to be corrected, but before that we need to understand what kind of deficiency is this. If we don't understand, or we understand incorrectly, we will apply the wrong solutions, or we will give the wrong corrective measures. So that should not happen. So diagnosis is very key method in addressing any hydroponic nutrient problem. We will address that one. We will look into. Crop Jeevan has developed the hydroponic. Crop Jeevan has developed the diagnostic tool. That diagnostic tool we will look at. I will try to introduce the mobile nutrient and immobile nutrient, because this is very important aspect to diagnose the hydroponic nutrient deficiency. Symptoms we will study based on the mobile nutrients and immobile nutrients. We will give the special consideration for a hydroponic system where we need to be careful about understanding the deficiencies. On the next point, we will get introduced to identification of a nitrogen deficiency symptoms and a calcium deficiency symptom in hydroponic lettuce. Further consideration and discussions I will talk about in a short. Let us move on to the next slide, where we will get introduced to the diagnosis. What today we are going to learn is a very important aspect, as I mentioned, that
if your hydroponic system, your hydroponic plants are deficient, not showing the proper growth, or they are showing the abnormal symptoms like necrosis means yellowing, or chlorosis means yellowing, and necrosis means the burning spots onto the. I will show the picture. So if this kind of a growth or the problem unhealthy plants are there, how will you say that which kind of nutrients are in shortage or in excess? Today we will speak specifically about the deficiencies. We will not speak about the and we will focus on to calcium and nitrogen. So when you are doing a diagnosis like a doctor, what you need to ask the question to the plants. First question, you need to understand it, where is the pain, where is the symptom. See, divide your plant into two parts, the lower part, older and grown part, and upper part. At least everybody will be able to do this one. Okay. Now let us go on to the next question, or the aspect or the facet to look into, whether the leaf is showing this deficiency symptom, stem is showing the deficiency symptom, fruit or flower is showing the deficiency system. Is it clear to everybody that the you have to divide your plant into the upper part and the lower part? Lower part is usually the grown part or the older leaves. Now the third point we will look into, if it is a leaf, what to look into the leaf. See whether the tip of the leaf is affected, whether the edges of the leaf are affected, whether the center of the leaf is affected. That aspect you need to study. I am giving you the step by step diagnostic tool in your hand. You are today going to get very important tool in your hand. You are going to be a doctor to your plants. You will at least will be able to identify whether you will be able to identify a group of nutrients that probably are deficient into your system. Even though with the less experience you may not be able to identify exact element, but at least the group of element. I don't have the deficiency of mobile nutrient, I don't have the deficiency of the immobile nutrient. After my lecture you will be 100% sure to answer this question. I am damn sure about it. I will make sure that you will learn at least this much today. Whether the deficiency, I am talking about the fourth aspect to look into when you are diagnosing your plants in hydroponic, your crop in hydroponic, whether the symptoms are between the veins or it is on the veins. How the another aspects to look about the deficiency symptoms is how the symptoms progresses, whether it is a growing from a tip of the leaf towards the stem or opposite way, or whether it is going from the new leaves to the old one, or from old one to new one. That you need to keep on observing when you take a round in your hydroponic system, or you take a look at your domestic hydroponic that you are going, or anywhere you are going the plants. So let us go on to the next slide and get introduced to the crop G1's proprietary diagnostic tool. This is the tool that we have developed internally and adopted. So what is this tool is? This tool is called as a CG1 diagnostic tool, or crop G1's DT, CG1 DT or G1 DT, you can say into the short. This will identify the nutrient deficiency. This is a methodological tool developed by our scientists, adopted by our scientists at a crop G1 for a diagnosis of nutrient deficiencies. This tool will certainly help you. I mean, there is a difference when the two doctors are looking at the same patient. Depending on their experience, their conclusion, their diagnosis, their analysis will be different, but at least you will be able to tell that whether your crops have the deficiency from A group or B group. Let me say A group as a mobile nutrient,
B group as a immobile nutrients. In this lecture of a 20 or 25 minutes, we cannot expect more, but at least let me make sure that you identify the deficiency of your crop into two groups: immobile deficiency because of mobile nutrients, deficiency because of immobile nutrients. And I will give you one example from each class. That's it I'm going to do. We use this G1DT or diagnostic tool, crop G1's diagnostic tool, to help our clients to maintain the healthy crops and optimal nutrient balance in very economical and efficient way. Because if you don't use the nutrient solution in an economical way, you are wasting the money. So now before I go and explain to you the crop G1's diagnostic tool, let it is very important for all of us to understand the mobile nutrients and immobile nutrients. Everybody knows the macronutrients, micronutrients, and how many plant nutrients are there. All of us basically know. I'm not going to speak onto that one. Let me focus what is a mobile nutrient, what is immobile nutrient, which are the mobile nutrients and which are the immobile nutrients. I will speak only that much, not more than that. Mobile nutrients are able to readily move, translocate from one location of the plant to the another location. These are the mobile, as the name suggests. And these nutrients are nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, and zinc. Second category of nutrients is immobile nutrients, which are also, I mean, they are not completely immobile, but they are less mobile nutrients. These are calcium, iron, sulfur, boron, copper, manganese are immobile. What does it immobile means? They do not translocate easily from one part of the plant to another plant. There is a science behind why the few nutrients they are translocating easily or moving easily, and why some are not moving easily. There is a science behind that, there is a mechanism, but we are not going into the detail. On this slide the mechanism is given, but we don't have enough time to discuss it today. So now let us come to the diagnostic tool. As you people, I have introduced to you to the mobile nutrients and immobile. What is the significance of this categorization or a classification? Why I wanted you to understand it. Here the question, the answer to that question. Why I wanted you to understand. I earlier mentioned to you that divide your plant into two parts. One is the upper part, one is a lower part. So now let me make it clear to you. If the plant's upper part is showing you the symptoms, it is because of immobile nutrients. I have given you the tool today in your hands to say that if the plant's upper part, young leaves, new leaves are showing the symptoms, it is because of immobile nutrients. It is not because of nitrogen, phosphorus, potassium, zinc, or manganese. It is very helpful to you. If the symptoms are seen at the older leaves, lower part of the plant, the deficiency is certainly due to the mobile nutrients. Now, you can easily say that anybody of you can look at the plant. If the lower part of the plant is showing the deficiency symptom, now you are sure, from today onwards you are sure that this deficiency is because of nitrogen, phosphorus, potassium, manganese. Sometimes zinc is little bit, I mean, it shows it is a little bit more it is immobile as well as mobile. It is on the boundary line. In some spaces it shows the, but that is a little bit critical for the advanced people to understand, but I will speak, I'll not spend time onto that one. So on this slide you can clearly say that see that the older or lower leaves affected, or the low or the upper and younger leaves are affected.
So you got into the diagnostics tools first step, whether it is because of mobile nutrient or immobile nutrient. Now going further, what I will do is, we have further very specific narration, very specific diagnostic methods for each nutrient deficiency. But because of this time constraint, let us focus clearly onto one nutrient and understand how it is seen into the lettuce in hydroponic system, so that you will have the fair idea. We can discuss this later on sometime, or you can contact us for the further information if you are further interested understanding or analyzing uh, your deficiency of the plants in hydroponic system. So now what we have seen into the earlier slide is the category L and category U. The L is onto the lower leaves, U is onto the upper leaves or young leaves. Now further we have the class of nutrients: nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, and zinc. Out of this, which particular nutrient is showing the deficiency? This L group will be further divided into two, two classes based on whether it is showing a general chlorosis. Chlorosis means yellowing of the leaves, and drying of the lower leaves. If it is showing the retarded growth, this deficiency is because of either nitrogen or phosphorus. Now, how to differentiate? Now you don't have the question whether it is because of potassium. Now you had earlier question whether it is because of potassium and zinc or magnesium. But now the question is out of uh, analysis. It is certainly, if you see the general chlorosis, it is either nitrogen or phosphorus, not the potassium. I will tell you the potassium symptoms also, but in the next slide in a brief, and then we will go to see the nitrogen deficiency into the lettuce. This is about the deficiency because of the mobile nutrient. So now here we have seen that the on a left hand side we have seen that the general chlorosis, drying of the leaves if it is observed. Now we will divide this one into the two deficiencies. Chlorosis progresses from the light green to yellow. Okay, then this deficiency is because of nitrogen. But if the leaves remain the dark green, then don't question yourself that this deficiency is because of nitrogen. I am making it very clear to you how to narrow down correctly on which nutrient your plants are deficient about. See, the class here, one class will remain a dark green deficiency, and there is a distinctive purple coloration, then this deficiency is because of phosphorus. But if there is a chlorosis progresses from light green to yellow color, not the purple color, okay, older leaves, from older leaves up to new growth, growth is restricted, loss of older leaves is observed, then this deficiency is attributed to nitrogen only. I will show you the picture today how it looks into the lettuce. I'm not going to discuss about the phosphorus deficiency in detail. Also, further, these deficiencies which are now remaining nutrients that may show the deficiency, they are from the class of mobile nutrients like magnesium, zinc, potassium, and molybdenum. They have their own very characteristic symptoms I have described here, but we will go back to the nitrogen deficiency and the calcium deficiency today only, not going into the details of the other deficiencies.
Okay, we need more time to understand each deficiency in detail. Uh, so if now we have seen from the if the deficiency is in the lower part and if there is a general yellowing of the leaves into the lower part, then it is because of the nitrogen. Now if the deficiency is seen into the upper part, what kind of nutrients will be deficient? One thing you will be sure that these deficiencies because of immobile nutrients. That is for sure. So I will go back and give you the very big tip if the symptoms are shown by the upper part of the plant. The tip is to look at the tip of the leaves, tip of the leaf. If you look at the tip, if the tip is distorted, you are sure that this deficiency is either by calcium or boron. How easy it is? The crop Jivan has into its analysis methodology has made it very simple, but I will like to again uh, give you people on a precautionary note that please understand that these deficiency, if they are because of one element, you will see this peculiar pattern into your crops. But if the deficiency is because of couple of elements, then it will be difficult for you to analyze it on your own. You may need the help of the expert, or you may need to send your nutrient solution for analysis or your leaf sample for analysis to understand the deficiency. So I will request that before it worsens, before it becomes a very bad, I will request you to analyze the deficiency. What happens is deficiency of a one nutrient leads to imbalanced absorption of another nutrient. So when you don't address one deficiency, it leads to the deficiency or over absorption of another nutrient into the plant system, and then that element, nutrient element, also shows the deficiency. When the two deficiencies are mixed, it will be difficult for a normal person, a common man, to analyze it further. So my request, my suggestion to you is analyze your nutrient deficiency. Keep talking to your plants every day and very often. Do not let it get more complicated. It is like multi-organ failure. If we do not look at the patient in the early stages, then it leads to multi-organ failure. Then it is very difficult to treat the patient. Same thing here. So we will look into the tip. If the tip is distorted, this I will show you in the picture in the coming slide with the nitrogen and calcium deficiency. There's two slides I'm going to show you for today's webinar, today's discussion. So, no doubt, if the tip is alive, then there is a possibility of the deficiency of a copper, manganese, and sulfur. But if the tip is distorted, deficiency is certainly because of calcium and boron. Be assured about it. So, brittle tissue not present in the growing trips. This is a peculiar symptom of the calcium deficiency. Young leaves are chlorotic, old leaves remain green. Okay, stem is a thick and woody, growing tip necrotic, followed by the dieback, complete dying of the tip. Okay, so we are going to today look into the two deficiencies, that is a calcium and I will directly jump onto the deficiency by the nitrogen now. Just after taking the look at the, see, other deficiencies can be brittle tissue if it is there, shortening of internode, that will be the boron deficiency, but I will not explain it into the deal because of the constraint of our time. And if in UB there is a one class when the tip is alive, the another class is when the tip is not alive, it is certainly because of calcium or boron. If the tip is alive, then it is because of copper, magnesium, or sulfur.
and iron. These deficiencies are because of these elements, and it depends on whether the leaves is wilted or not wilted, and couple of other differentiations are there in our methodology. And I will move on to the nitrogen deficiency. I will tell you about the nitrogen deficiency. Actually, the nitrogen is the most important element that is used by the plants and provided in form of fertilizer to the crops. Okay, in general also, and in hydroponic also. But I will tell you, there is a 78% of a gaseous nitrogen is present into the air, but plants cannot use it. If plants would have been able to use this nitrogen, there would have been the biggest help for the agricultural industry. But it is not the case. Nitrogen is a mobile nutrient that I mentioned. Nitrogen causes the chlorosis. Deficiency starts from the old days, that also I mentioned to you, moves back from the tip of the leaf to eventually back and then above. Stunted growth, that I will show you with the comparing the two pictures and two examples. Chlorotic and yellow leaves, I will show you how it appears onto the next slide. So here we are onto the nitrogen deficient plant. You would be able to see that, there is a stunted growth where the nitrogen is not present, and this is a normal plant. You could see that there is a stunted growth. This is the initial result. Will be a lighter green. I'm showing here the lower leaves lighter green, but upper leaves remains the green. This way you will be able to see in the within the first week of the deficiency, first 2 weeks of deficiency exposure, if the nitrogen is not available, you will be able to see the progression of this deficiency happen. I have mentioned to you in the diagnostic tool what you need to look into. See, now suppose this plant is in front of you, and I will tell you, I will ask you a question, that please analyze this deficiency. Now after my this lecture, you will be certainly able to tell, sir, this deficiency is because of mobile nutrient, because it is shown onto the lower part of the plant, it is shown onto the older leaves. You could see the picture onto the right hand side when I have made the blue circles. You will be able to see these yellow leaves, and they are drying also. Okay, these leaves are drying also. So this deficiency is not seen onto the top. You could see that the top leaves are very much green, and only leaves that are becoming yellow are older leaves. So there is a clear differentiation. You don't need to get into the uh, uh, 16 or 17 elements to analyze which deficiency. You can certainly categorize that this deficiency is because of mobile nutrient. I don't have any question in my mind. Now which mobile nutrient, that you need to study and narrow down. This is because of nitrogen, phosphorus, or potassium, or magnesium, that you need to see. So here this deficiency, I will certainly be able to say that as the leaves are not green, lower leaves are not green, it is because of the nitrogen. Complete chlorosis of the older leaves, you will be able to see. So this is the hydroponic lettuce. I am bringing an example to you. In a next slide, I will get on to the calcium deficiency. Now you have learned that calcium is an immobile nutrient. So deficiencies are concentrated at the newer growth. Specifically in indoor system, you will see the necrosis or dead brown crispy little leaf tissue out on the margin of the leaf. It will start from the tip of the leaf, and but do not confuse it with the tip burn, which also I will show you the example of the tip burn, which causes because of the environmental conditions. In the next slide, we are looking at the calcium deficiency in a hydroponic lettuce. So initially in the first week, the scattered necrotic spot on the young leaves will be observed. The marginal necrosis and distortion of the young leaves. You will be able to see, my friends, here, see the older leaves, how the opposite, what is the difference, why I introduce you the immobile nutrients and mobile nutrients. Now you will be able to see that the older leaves are fine, they are green, not affected. Okay,
but the younger leaves, those are coming new leaves, they are affected. So this deficiency is because of some kind of immobile nutrient. Okay, so let us now further look into if it is showing the marginal, and I also given you the tip, whether the tip is alive or the tip is not alive. So here the tip is not affected, tip is not normal. So in this deficiency, the initially you will see that the scattered necrotic spots on the lettuce, okay, leaves. But as the deficiency progresses, if we don't pay attention to it, then it is going to be the completely dead tip at the top of the lettuce. You will be able to see. So identify is as a calcium deficiency and take the corrective actions. Whereas as the time is short, we are not going to speak on to the corrective actions. And this is because of the tip burn. Do not confuse your calcium deficiency with the tip burn. I'm giving you here one of the picture uh, from the literature about the tip burn and how to differentiate the how now you from these two examples, one shown onto the lower part of the plant onto the older leaves, which is because of nitrogen, which is shown by on the upper part of the leaves, which is because of calcium. I have explained to you. Hopefully this will help you in analyzing the primary lily, not completely but primary lily your plants. And this session I will open it for the question and answer. Thank you very much, Purushottam sir, for focusing on the very important aspect of the plants, that is nutrient, and in a very simple way you have explained it and very understood. So thank you very much for very informative session. Thank you very much once again. And all the credit of this goes to our today's sponsor, AlpGiri, for sponsoring this webinar. Thank you very much to AlpGiri. In the last, we will take the question and answer session, sir. Sir, So, yes, sir. I may not be available after the session up to 4 o'clock. Okay. So I would like to take the questions and answers if there are anything. No issues, sir. No issues, sir. We will go for it, sir. Okay. Okay. So I request all the participants, those who have any question to Purushottam sir. Or So I they are have free given to my ask. details. They can contact me Yeah, separately. yeah. That is also fine. So is there any question from the participants to Dr. Purushottam sir? Because he is not available after 4 o'clock. Sir, I think you can put your mobile number on the in the chat, so it will be easy for the I participants to have contact. already given here. I will also put my mobile number and email ID in the chat so that people can contact me. Or from your association, I will request someone to share my mobile detail and We will do, sir. We will do, sir. so that And participants should not miss because I was not available. I mean my purpose is that. So, yes, sir. Thank you very much, sir, for sparing your valuable time with us and sharing your valuable knowledge with us. Thank you very much once again, thank you, and sir. hope to see you in the next webinar also. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much for in. Now we are with Mr. Girish Patel from AlpGiri Seeds, one of the leading company in the seeds. So the company is promoted by Mr. Girish Patel. He is MSc in horticulture. The company has spread its operation in Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh with more than 65 hybrids varieties in 35 crops. Recently, company has recognized by the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR), Ministry of Science and Technology, Government of India for its in-house research and development. Company has tested several vegetables and field crops hybrids in the field of SAUs of Maharashtra, especially okra and watermelon and gourds. Company has the MOU with ICRISAT also. They are specially MOU with leading the world level organization with CIMMYT, Mexico for corn. So today we have a great personality with us of AlpGiri,
Mr. Girish Patel. He is the managing director of this company. So I welcome him on behalf of Indian Nurseryman Association, and I request him to share his knowledge with us and technology of his company. So over to you, Girish sir. नमस्कार सभी मित्रों को, मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा और स्पेशली थैंक्स टू इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन और सभी पार्टिसिपेंट का मैं स्वागत करता हूँ। अल्पगिरी सीड्स जो हमारा विजन लेके चल रहे हैं वो डेवलप द एग्रीकल्चर सेक्टर फ्रॉम सीड टू फीड टू फूड टेक्नोलॉजी एंड कंट्रीब्यूट टू फार्मर एंड नेशंस। हम सीड भी बनाना चाहते हैं और साथ में न्यूट्रिशन लेके और साथ में फूड टेक्नोलॉजी जो हार्वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट के बाद होता है वो लेके चलना चाहते हैं। और इंडिया के अंदर पूरा एक टॉप रिकॉग्नाइज कंपनी जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता हो किसानों को, उस तरह से आगे बढ़ता है। तो हमारा कंपनी का वैल्यूज है HSC यानी ऑनेस्टी, हार्डवर्क और करेज के साथ। हेलो, इज इट ऑडिबल? You are audible. ओके। You are audible. गुजरात को जानते हैं सब लोग, गांधी जी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने एक अच्छी बात करी थी कि बिजनेस जो है विदाउट एथिक्स नहीं होना चाहिए, नीति नियमता होनी जरूरी है। तो वही हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं। सरदार साहब जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बताया था कि इंडिया को ग्रो करना है तो एक ह्यूमन रिसोर्सेस को डेवलप करना पड़ेगा, एनिमल को डेवलप करना पड़ेगा। उसमें हम जो दूध निकालते हैं, जो प्राणी जो जिससे अमूल डेयरी का स्थापना हुआ है। और तीसरा उन्होंने सीड्स की बात बोली थी। तो वही लक्ष्य, वही ध्येय और वही विजन और मिशन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मोदी साहब जो अभी प्रेजेंट सीएम, पहले पीएम थे, अभी पहले आज पीएम है और हमारे सीएम थे। और उन्होंने जब गुजरात में थे तब बहुत ही डेवलपमेंट के लिए काफी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किया और इससे गुजरात आगे बढ़ा है। आज हमने तो माल न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा डेफिशिएंसी हमारे ह्यूमंस में दिख रहा है। उसमें हमारा इंडिया भी बहुत नंबर्स में वो डिक्लाइन में काफी डेंजरस पोजीशन पे है। तो ये सीड्स का हम क्या रोल कर सकते हैं, इंडिया को ज्यादा से ज्यादा वो अंडर न्यूट्रिशन को किस तरह से हम वर्कआउट कर सकते हैं और हंगर को किस तरह से फाइट कर सकते हैं। अभी इंडिया में भी 30 करोड़ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो भूखे सो जाते हैं, कभी खाना भी नहीं मिलता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने बताया था कि जब वर्ल्ड में 6.6 बिलियन पब्लिक थी तब उन्होंने बोला अगर टेक्नोलॉजी अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी में नहीं लेके आओगे, तब तक हम इतनी पॉपुलेशन को फीड करना बहुत टफ रहेगा। तो 2050 तक एक्सपेक्टेड है कि 9 बिलियन पीपल हो जाएंगे पूरे अर्थ पे। तो उसको फीड के लिए अगर कोई टेक्नोलॉजी काम होगा तो वो सीड्स में होगा। तो इसलिए हम कंपनी जो है टेक्नोलॉजी के साथ है। हमारे कंपनी DSR रिकॉग्नाइज है, DSR डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। वो हम रिसर्च में काफी डीप में हम लोग काम करते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड में काम कर रहे हैं। हमारा रिसर्च 2012 से हमने काफी स्टार्ट किया था। आज हम लोग डिफरेंट क्रॉप्स पे, खासतौर के वेजिटेबल क्रॉप्स में काफी फास्ट तरह से डेवलपमेंट चल रहा है रिसर्च के अंदर। तो उसमें जो ओकरा है वो ELC यानी कि लीफ इनेशन बोलते हैं, लीफ कल वायरस और मोज़ेक वायरस है। उसके बाद वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का फूड या डार्क ग्रीन सेगमेंट में होना जरूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड रिसर्च है। कॉटन में भी आप देख रहे हो कि ये जो है ब्राउन कलर का जो कलर कॉटन है उसमें हमारा अभी जम्प्लाज्म कलेक्शन किया हुआ है। देन दीज आर द वो रेड लीफ में ही पिगमेंटेशन है, एंथोसायनिन कंटेंट है, दैट इज शोइंग नेचुरल रेजिस्टेंस टू द सकिंग पेस्ट। तो उसमें काफी अच्छा है। ड्रॉट टॉलरेंस पे भी हम अच्छे काम कर रहे हैं। ये जो है ये मशीन पिकिंग के लिए हाइब्रिड है, उसके लिए हमारे पास लाइन डेवलपमेंट है। अभी आने वाले भी लेबर प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे पास ऐसे हाइब्रिड होना जरूरी है। ये देख रहे हो आपके इंटरनोड लेंथ जो दो बॉल्स के बीच में है, ये कि इसमें काफी 10-15 सेंटीमीटर के अंदर 5-7 बॉल्स लग जाना। सो ये हायर यील्ड या जो क्लोज स्पेसिंग के लिए हाई डेंसिटी जो रहता है प्लांटिंग सिस्टम, उसके लिए सुटेबल है ये। और ये जो है सिर्फ 2 फुट का प्लांट है, उस तरह का हम लोग अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं कॉटन के अंदर।
यह गोसिपियम आर्बोरियम है, जो देसी कॉटन है, बहुत सारी जगह पे वो लगाते हैं किसान लोग। इसका भी एक एरिया है जहाँ पे उसके बाद बनाना लगाते हैं, तो वो क्रॉप में काफी अच्छा आता है, तो वो जमीन को फाड़ता है, इसलिए इसको ज्यादातर लोग यूज करते हैं। कैस्टर इज अनदर क्रॉप वेयर रिसर्च के लिए बहुत बड़ी जगह है। कैस्टर आज तक वो लॉन्ग ड्यूरेशन, वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, एक ही क्रॉप आता है या दूसरा क्रॉप आप नहीं ले सकते। तो हम लोग अभी कैस्टर में अर्ली सिस्टम पे जा रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट अर्ली सिस्टम में चल रहा है। उसके बाद जो ड्वार्फ रहना चाहिए, वेराइटी नंबर ऑफ प्लांट्स आने चाहिए, हाई डेंसिटी प्लांट सिस्टम में भी हम कैस्टर पे काम कर रहे हैं। These are the new technology for this crop. Actually कैस्टर बोलते हैं उज्जड़ गामा एरंडो प्रधान गुजराती में बोलते हैं। तो मतलब ये बड़ा प्लांट होता है, लेकिन उसको हम छोटा बना के उसको और अच्छे से हाई डेंसिटी में कैसे लेके जाए। तो दिस इज आवर मेन रिसर्च मोटो इन दैट, कि नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़े और इससे यील्ड ज्यादा हो और अर्ली से निकल जाए, दूसरा क्रॉप रबी या समर आप क्रॉप ले सकते हो, लाइक दैट वो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो वो बाजरा है, तो बाजरा में भी हम सभी जानते हैं कि ये ड्रॉट एरिया में ज्यादा चलता है या जहाँ कम पानी होता है वहां चलता है। तो उस हिसाब से हम अभी हाइब्रिड में उस लेवल की हाइब्रिड बना रहे हैं जो हाईली ड्रॉट टॉलरेंस हो और हीट टॉलरेंस हो। खास करके बनासकांठा जो एरिया है जहाँ समर में बाजरा लगता है, 48 40 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, उसमें भी सीड सेटिंग होना चाहिए। तो उस टाइम का उस तरह का टेक्नोलॉजी उसके साथ हमने इक्रिसेट जो बोलते हैं इन जो उसके साथ हमने टाइप किया है, जो वर्ल्ड लेवल का इंस्टीट्यूट है। दूसरा हम उसमें ही हार्वेस्ट प्लस बाजरा बोलते हैं, ये हाई फेरस और जिंक कंटेंट होना जरूरी है। आज ह्यूमन बॉडी में फेरस कंटेंट डेफिशिएंसी बहुत दिखने मिलते हैं, जो बच्चे माल न्यूट्रिशन हो रहा है इंडिया में, वर्ल्ड में, अफ्रीकन कंट्रीज में। तो वो जो होता है बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी होता है, उससे थैलेसेमिया जैसा डिजीज भी होता है। और दूसरा जिंक, जिसकी वजह से आप भी देख रहे हैं कोरोना में अभी जिंक कंटेंट और सप्लाई की बहुत जरूरत पड़ी थी, और आज भी जिंक इज मेजर फाइटर फॉर कोरोना। तो इस तरह का अगर आप फूड में ही अगर मिल जाता है, तो वो बाजरे में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हार्वेस्ट प्लस जो हमारा इक्रिसेट्स के टाइप हुआ है, उनसे जम प्लाज्म लेके हम उस पर हाइब्रिडाइजेशन चालू प्रोग्राम किया है। व्हाइट मेज, और ये मेज में जो है वो भी सीमेंट के साथ हमारा टाइप है। सीमेंट मैक्सिको में आया, वर्ल्ड लेवल का रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है। सो उसमें मेज में भी हम अपराइट मेज, जो नंबर ऑफ प्लांट हाई डेंसिटी प्लांट सिस्टम में जो रहता है, लीफ का जो शेप है वो वी शेप में आना चाहिए। तो उस तरह की हाइब्रिड हम बना रहे हैं अभी, नंबर ऑफ प्लांट्स पर एकड़ बढ़ना चाहिए। सेकंड उसका अभी हम CMS बेस यानी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइन पे भी हम मेज में काम कर रहे हैं। वेरी सुन वी विल प्रोड्यूस द हाइब्रिड रिलेटेड दैट विल सुटेबल लाइक CMS लाइन। और उसके बाद तीनों सीजन में मेज लगना चालू हो गया, खरीफ, रबी और समर। तो तीनों के सीजन में उसका सीड सेटिंग प्रॉपर आना चाहिए, वो भी एक हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और डबल कोब आना चाहिए। जनरली मेज में एक कोब आता है, दूसरा कोब में सीड सेटिंग नहीं होता है। तो हम लोग ने जो पोलन्स जो होता है ऊपर जो टेसल्स रहता है, उसका जो एंथेसिस पीरियड है वो लॉन्गर कैसे होता है, या सिल्किंग पीरियड, दोनों कोब का सिल्किंग टाइम कितना जल्दी से हो सके, तो उस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हम डबल कोब यानी यील्ड सीधा 1 से 1.5 गुना या 1.5 गुना से 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं, प्लांट नंबर ऑफ प्लांट बढ़ा के और नंबर ऑफ कोप बढ़ा के। और उस हिसाब से हाइब्रिड का हम लोग अभी प्लान, ये हमारे रिसर्च अलग अलग सालों में हम जहाँ पे हमारे रिसर्च थे, ये विजिटर हमारे के साथ हम टोमेटो में अभी काम करें, उनके साथ हमारा टाइप टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़े ये हम देख रहे हैं। देन ये जो है वो नाइजेरियन एम्बेसी के लोग थे, नाइजर कंट्री के लोग आए हुए थे हमारे यहाँ पे रिसर्च फार्म पे। हम जो इक्रिसेट के साथ जो टाइप हुआ है उसका वर्कशॉप थे, इंटरनेशनल साइंटिस्ट हम लोग वर्कशॉप में पार्टिसिपेट हुए थे। और ये डॉक्टर सदानंद है जो इनके साइंटिस्ट सिमिट के साइंटिस्ट है। ये हमारा रिसर्च स्टेशन है, ये पिपलोद विलेज तालुका निजर डिस्ट्रिक्ट तापी है, जो इंटीरियर एरिया में। ये हमारे वेल विशर्स है। ये हमारी प्रोडक्ट है कॉटन में, जो टोटल
किसानों के अंदर काफी पॉपुलर है और ये बहुत ही हाईली रिज्यूनेटेड प्रोडक्ट है। हेरीनेस अच्छा है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है, दिवाली से के होली तक। ये कॉटन में अगर नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट है हमारा वोल्वो, इस बार काफी अच्छा महाराष्ट्र के अंदर उसका जबरदस्त क्रेज हो चुका है और ये हेवी यील्ड में वेरी बिग बॉल साइज में प्रोडक्ट है। ये हमारा सीमेंट और इक्रिसेट के साथ जो टाइप हुआ उसका एग्रीमेंट कॉपी है। ये बाजरा में हमारा प्रिंस जो राजस्थान के एरिया में चल रहा है और वेस्ट प्लस जो बता रहे हैं जिंक वाला फोडर। मस्टर्ड भी हम कॉन्सेप्ट बेस में मस्टर्ड पे काम कर रहे हैं, खासतौर पे मस्टर्ड में हम लोग डबल जीरो एक नया कॉन्सेप्ट आया है। डबल जीरो में एक एंटी न्यूट्रिएंट्स जो रहता है, यूरेसिक एसिड जो रहता है, उसकी मात्रा अभी के जो लोकल जो मस्टर्ड है उसमें काफी हाई मात्रा में है। उसको लेस देन 2% पे लाना एक चैलेंजेस होता है। उषा ने भी अभी वो एक हाइब्रिड रिलीज किया, एक प्रोडक्ट रिलीज किया हुआ है, तो उसके अंदर काफी अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है। और उसके साथ ग्लूकोसिनेट करके जो कंटेंट है वो काफी हाई रहता है, उसको भी लो डाउन करना है, मतलब जीरो लेवल पे लाना है। अगर ये दो चीज हो जाता है तो जो फैटी एसिड यानी जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्यूशन हो सकता है। सो दीज आर द वो टेक्निक्स जो रहती वी आर यूजिंग in that by collecting different germplasm, different source of the world और indigenous source of the germplasm ये रहता है। और उस तरह से हमारा ब्रीडिंग प्रोग्राम, हमारे साइंटिस्ट लोग, हमारी टीम है पूरी ऑल इंडिया में। वी आर हैविंग 40 स्टाफ एंड इसमें से रिसर्च में हमारे 15 लोग हैं जो कंटिन्यूस रिसर्च कर रहे हैं। वी आर वर्किंग राइट नाउ इन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। वी आर ऑल्सो राइट नाउ गेटिंग द लाइसेंस इन छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। सो हम लोग पूरा इंडिया अब कवर करने का प्लानिंग है। खासतौर के भिंडी में हम लोग ने काफी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए। 1-0T सुपर ओकरा टाइप है, लीफ एरिया इसमें बहुत कम होता है। अभी स्टिंग बग करके नया एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है साउथ गुजरात विहारा में। सो वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। उसकी वजह से फ्रूट क्वालिटी काफी बिगड़ रहा है। केसर वी आर हैविंग अ वेरी हाई यील्डिंग एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हाइब्रिड, उसका डार्क ग्रीन फ्रूट होता है और उसमें भी हम लोग ने ELCV एंड येलो वेन मोजेक वायरस का 100% रेजिस्टेंस पावर डेवलप किया हुआ है। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का भी फ्रूट होता है। इसका टिप और फ्रूट लेंथ रहता है 8 से 10 सेंटीमीटर तक का। दीज आर द फ्रूट ऑफ फीमेल एक्चुअली, बट इट्स एक्सेलेंट हाइब्रिड। कितना भी लंबा बड़ा हो जाता है लेकिन वो डार्क ग्रीन से उसका लीफ नहीं छोड़ता है। सो ये दिस इज अगेन आवर मेजर फोकस क्रॉप इज वाटरमेलन। वाटरमेलन में हमारे पास डिफरेंट 3 सेगमेंट्स है। ये जो ब्यूटी देख रहे हैं, दिस प्रोडक्ट नेम एक्चुअली इट्स हैविंग जुबली सेगमेंट बोलते हैं। ये बहुत ही हैवी यील्डर एंड 8 से 12 kg का फ्रूट्स आता है ये, और बहुत ही बढ़िया यील्ड है उसका। और ये ब्लैकबेरी है जो आइस बॉक्स सेगमेंट बोलते हैं। आज फैमिली छोटा हो गया, छोटा फ्रूट चाहिए लोगों को, तो उसमें सीड की मात्रा भी कम होती है और वेरी रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए काफी अच्छा है। ये बॉक्स है जो हेवी यील्डर प्रोडक्ट है और अराउंड गुजरात और अलग अलग महाराष्ट्र के पॉकेट और MP में भी अच्छा चल रहा है। आइस बॉल ये राउंड सेगमेंट में, ये जनरली जो रिवर बेल्ट होता है वहां पे इसका फार्मिंग होता है। ये काफी पॉपुलर है फार्मर के। ये आइसक्रीम हमारी एक सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट में आता है। इसका खासियत यह है कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसका जो वाइन है वो हरा रहता है, मींस एट द लास्ट मोमेंट ऑफ मैच्योरिटी आल्सो इट्स रिमेन द वेरी ग्रीन प्लांट्स। सो उसके साथ इसका TSS काफी बढ़िया है, 13 से 40% है और काफी स्वीटनेस है। सो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी लंबा समय तक चलता है और इसको कोई डैमेज नहीं होता है, उसके अंदर कोई जाली नहीं बनता है। जाली बनना है यानी फ्रूट्स के अंदर जब लॉन्ग ड्यूरेशन में जाता है ट्रांसपोर्टेशन में तो कभी बिगड़ने का चांस होता है, तो वो ईटेबल नहीं रहता है। लेकिन इसके अंदर वो कैपेसिटी है, ये प्रोडक्ट इतना पावरफुल है कि वो बहुत ही ओनली बिकॉज ऑफ उसका वाइन बिल्कुल हरा भरा रहता है। देख सकते हैं कि ये ग्रीन है, ये पूरे अलग, ये पूरा पौधा भी दिख रहा है कि ग्रीन है और ये हार्वेस्टिंग चल रहा है। So chili is our major focus crop also. We are doing 3 concept based chili. Virus tolerance तो हमारे हर प्रोडक्ट में हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन
उसके साथ साथ ग्रीन, फ्रेश ग्रीन भी बिकना चाहिए, फ्रेश रेड भी बिकना चाहिए। तो ये फ्रेश ग्रीन और रेड के लिए भी है, और दूसरा एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए फ्रूट्स रहना जरूरी है। आप देख सकते हैं ये पूरा कहीं पे भी जब वायरस नहीं दिख रहा है, और ये जो वेराइटी हमी वो अच्छे से चल रहा है। और शकीरा ये रेड पर्पस खास तौर पे इसको हम लोग ने पाउडर फॉर्म के लिए ज्यादा, इसमें रिकवरी परसेंटेज 25 से लेके 28%, बट हमारा ब्रीडिंग प्रोग्राम ऐसा चल रहा है कि आने वाले दिन में हम 30 से 32% रिकवरी हो जाए ड्राई में। तो वी आर लुकिंग फॉर दैट हाइब्रिड ऑल्सो। सो इसके अंदर काफी वायरस टॉलरेंस भी है, डाइबैक और पाउडर मिल्ड्यू के अगेंस्ट उसका रेजिस्टेंस पावर है। हम जो चिल्ली के फार्मिंग जहाँ करते हैं या करवाते हैं हमारे किसानों को, तो हम मल्चिंग या ड्रिप खास करने का आग्रह, क्योंकि आने ये अभी जो जमाना है वो हाई यील्डिंग का है। आने वाले दिन बार एक्सपोर्ट क्वालिटी का काफी हुआ है। सो दिस इज अ मारिया, ये लॉन्ग पैरोट ग्रीन सेगमेंट का प्रोडक्ट है। ये भी ड्राई पर्पस में भी जाता है, उसका चिल्ली का रेड कलर का कलर भी अच्छा रहता है पाउडर फॉर्म के लिए। स्नैकी है ये हाउस के अंदर ज्यादा चल रहा है। ये बेल जो कैप्सिकम है जो ग्रीन हाउस और नेट हाउस के लिए है। तेजल हमारा ये हाईली वायरस टॉलरेंस प्रोडक्ट है, और इसके अंदर 100 210 दिन 220 दिन तक का वायरस टॉलरेंस ही पाया गया किसानों के पास। हमने काफी अच्छे ट्रायल्स लिए थे और हर जगह पे इसका, और ये ओलियो करके हम अभी लेटेस्ट ये प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हैं। दिस आर हैविंग ए वेरी गुड एक्सपोर्ट क्वालिटी। एक्चुअली एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए फ्रूट्स का यहाँ ठीक रहना और ये शॉर्ट प्रोडक्ट होना जरूरी है, 8 से 10 सेंटीमीटर तक का। और उसके साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट में जाते वक्त ये पानी नहीं छूटना चाहिए। ये भी एक जब ट्रक भर जाता है मटेरियल से तब उसका पानी निकलना चालू हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। वो एक्सपोर्ट की मेन रिक्वायरमेंट होती है। और लॉन्गेस्ट समय तक उसका स्किन बिल्कुल टाइट और एकदम शाइनी होना जरूरी है। सो आप देख सकते हैं ये फोटोग्राफ्स में हमारा ये प्रोडक्ट उस लेवल का आपको देखने गुड वायरस। डिफिकल वायरस जो है वो अभी का मेजर कंसर्न होता है, लेकिन हम उसमें भी ये आने वाले दिनों के लिए ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो एंटीवायरस को लेके चल रहा है। ब्रीडिंग प्रोग्राम में काफी हमारे 6-8 जनरेशन के बाद वी आर गेटिंग वेरी गुड लाइन्स, एंड अभी हम लोग उस पर काफी कम है। ये हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल का जो हमारा जो ये है, जब हमारे पास मटेरियल आता है हाइब्रिड बन के, so we are taking the sample and one sample goes to grow out test and one sample goes to lab जर्मिनेशन, मॉइस्चर टेस्ट, फिजिकल टेस्ट होने के बाद उसको हमारा जो जीओटी टेस्ट आने के बाद ही वो रिपोर्ट लेके पूरा सब स्टैंडर्ड है उसको रिजेक्ट किया जाता है। देन स्टैंडर्ड मटेरियल वी आर डूइंग प्रोसेसिंग, पैकिंग, डिस्पैचिंग एंड सेल्स रिटर्न। बट अगेन फॉर द पैकिंग वी आर हैविंग दिस लैब, we are this is the facilities plant process plant, but again the जो वेजिटेबल्स है वो हाई वैल्यू क्रॉप्स है। तो हाई वैल्यू क्रॉप्स को कभी भी ट्रीटमेंट के लिए या जो भी सीड ट्रीज में वैल्यू एडिशन करना जरूरी है। तो इसलिए वैल्यू एडिशन में हम लोग उसको ट्रीटमेंट के साथ जो थाइमेक्टोजेम है जो सकिंग पेस्ट के लिए है, फंजीसाइड में विटावेक्स हम यूज कर रहे हैं। लेकिन एक जो साइटोजाइम जो वर्ल्ड बेस्ट कंपनी है जो बायस और वो इंडिया के साथ हम अभी उनके साथ एसडीएम बोल के जो हम लोग एसडीएम प्रोडक्ट को हम सीड ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं। हमारे सारे वेजिटेबल्स, सारे फील्ड क्रॉप्स, सारे कॉटन्स अभी साइटोजाइम का एसडीएम प्रोडक्ट के साथ ट्रीटेड हुआ आता है, जिसकी वजह से जर्मिनेशन में हमारे पास ही उसका कम से कम हम 10 से 15% का गियर अप हमको मिला है। और साथ में उनकी नर्सरी में भी जो प्रोडक्ट्स आई हुए, हम डिफरेंट प्रोडक्ट जैसे डॉक्टर पुरुषोत्तम साहब ने बोला है उसके हिसाब से जो हमारा फोकस चल रहा है, आई थिंक वी आर राइट ट्रैक कि हम ये साइटोजाइम के साथ टाइप हुआ है। ये यूएस में उनका कंपनी का ये हेडक्वार्टर कंपनी को लग जो प्रोडक्ट बना रहे हो 23 प्रोडक्शन स्टेज से वर्ल्ड की इन वेरी गुड क्वांटिटी, एंड उनके क्लाइंट्स है बड़े बड़े कंपनीज, उसमें कोटेवा है, लाइक दैट कंपनी, यूपीएल, कोरोमंडल।
दे आर हैविंग क्लियर कट गोल्स। वो कंपनी को मैं ज्यादा हाईलाइट करूंगा, उसके पहले उनके जो गोल्स है वो मैं बताना चाहूंगा कि दे नो दैट 65% yield loss ड्यू टू द एबायोटिक स्ट्रेस। हम लोग ब्रीडिंग का काम करते हैं, हमारा काम है प्रोडक्ट हाइब्रिड बनाना, लेकिन अगेन जो स्ट्रेस कंडीशन आती है इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, तब प्लांट का बिहेव चेंज हो जाता है। लाइक जब ज्यादा हीट हो, ज्यादा कोल्ड हो, ज्यादा रेन हो या ड्रॉट कंडीशन हो, उस कंडीशन में भी प्लांट को सर्वाइव करने के लिए सम न्यूट्रिशन बेस्ड सो फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट प्रोसेस, उसमें जो साइटोजाइम की जो प्रोडक्ट्स हम जो वी आर यूज, तो उसके पास सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि वो एक नेचुरल चिलेटेड फॉर्म में आता है। तो वो 2 घंटे से भी कम आवर्स में, दो घंटे के भीतर की प्लांट के अंदर एक्सपोज हो जाते हैं। ज्यादातर आप जो भी देख रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, वो EDTA फॉर्म में या सॉल्ट फॉर्म में आते हैं या सिंथेटिक चिलेटेड फॉर्म में आते हैं। तो उनको या तो 2 दिन या 1 दिन या 4-5 दिन लगते हैं उसको एब्सॉर्ब होने में प्लांट के अंदर। बट 100% एब्सॉर्ब नेचुरल चिलेटेड फॉर्म में रहता है, वो जिसको 4 घंटे में होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज साइटोजाइम ने जो एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया उसका नाम है मैक। मैक क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिव कंपाउंड। जो फूड हम खाते हैं या प्लांट लेता है वो एनर्जी करके और प्रोटीन, विटामिन, लिपिड बनाता है और वेस्ट रिमूव भी करता है। बट बाय साइड देयर इज कोएगुलेंट भी बनता है। वो कोएगुलेंट को एंटी कोएगुलेंट में कन्वर्ट या उसको तोड़ना, इसको इनिबिट करना या स्टिमुलेट करना या अल्टर करना, वो काम करता है एक्टिव कंपाउंड। और उसके साथ साथ ROS सिस्टम भी उनके पास है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। दिस इज अनदर, दैट इज टेक्नोलॉजी बेस्ड। वो पौधे का DNA नहीं बिगाड़ने देता जब वो, क्योंकि वर्ल्ड में जितनी प्रोडक्ट है उसमें सबसे हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स में आते हैं। वेरी गुड प्रोडक्ट तो वो सेल्स पे मेम्ब्रेन प्लाज्मा बिगाड़ने नहीं देता है। ये सीड 100 CL जो है वो सीड ट्रीटमेंट के लिए, जैसे मैंने बताया, तो इधर देख सकते हैं आप जो क्रॉप का नाम है और उसका डोज है। ये नर्सरी लोग जो नर्सरी में बहुत सारे, आज हमारा नर्सरीमैन एसोसिएशन है, तो हो सकता है इंडिया की जितनी नर्सरीज है उसमें सीड ट्रीटमेंट के लिए अगर ये 100 CL का यूज करते हैं तो आई थिंक इट इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी, और जो भी क्रॉप है उसको लॉन्ग सर्वाइवल का चांस भी मिल जाता है। नर्सरी प्लस ये भी जो प्लांट जो हमारे वेजिटेबल्स क्रॉप हम डीलिंग कर रहे हैं, जैसे चिल्ली है, तो दूसरा हमारे फ्रूट्स क्रॉप में अगर आप पपाया समझ लो, वेजिटेबल्स में वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, वो जब नर्सरी में रहता है तब इसका 2 स्प्रे होते हैं। अगर जर्मिनेशन के बाद 12th डे यानी 12वां दिन को इसको स्प्रे लेते हैं, और 12th के बाद वापस 10 दिन के बाद यानी 22 डेज के बाद अगर दूसरा स्प्रे इसका मिल जाता है, तो दिस इज अ बूस्टर का काम करता है वो, और प्लांट को नेचुरल हार्डनिंग बना देता है। जब प्लांट नर्सरी में रहता है तब वो एक स्पेसिफिक क्लाइमेट में रहता है, लेकिन जब वो बाहर आता है, जब हार्श क्लाइमेट रहता है, खास करके पपैया, जो पपैया अप्रैल मई में लगाते किसान, और चिल्ली को भी अर्ली जून में लगाते हैं, तो उस टाइम पे हार्श क्लाइमेट रहता है। उस कंडीशन में उसको सर्वाइव के लिए अगर नर्सरी प्लस डाला रहता है तो वो एबायोटिक कंडीशन में, यानी बहुत हीट होती है या बहुत कोल्ड होता है, बहुत रेन होता है या बहुत ड्रॉट होता है, उस कंडीशन में ये बेहतरीन काम करता है। ये 40+ ये फोलियर स्प्रे के लिए, उसमें 12 अलग अलग न्यूट्रिएंट बेस्ड है, आप देख सकते हैं। ये सल्फर, बोरन से लेकर कोबाल्ट, ये सब वेरी गुड प्रोडक्ट। ये भी 2 स्प्रे लेना जरूरी है, ये बूस्टर का काम ही करेगा। ये भी 45-50 डेज प्लांट पे या 60 डेज पे आप इसका स्प्रे कर सकते हो। ड्रेंचिंग में देना है तो 400 ml डाल सकते हो आप, और काफी अच्छा इसका रिजल्ट है। तो इसको सिर्फ आप कॉपर और जो सल्फर है उसके साथ आप नहीं डाल सकते, ड्रिप में देना है या आपको सॉइल ड्रेंचिंग करता है। 400 ml का डोज है, फोलियर का 250 ml का डोज है, ये पर एकड़ की बात कर रहा हूँ मैं। ये साइटो न्यूट्रिक कैप जो साहब ने बताया, पुरुषोत्तम साहब ने, कैल्शियम और बोरन का जो एक है ये मिक्सर है। कैल्शियम इज अ ट्रकर ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यू नो दैट। सो ये कुल मिला के काफी बढ़िया काम करता है। और बोरन के भी ये काम है। ये जिंक जो बता, इसके सबसे बड़ी बात 1 किलो का 1 लीटर का बॉटल रहता है, लेकिन इसका वजन कम से कम 1.5 kg जितना होता है। तो दिस इज हाईली ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स। आप जिंक को जितना इस्तेमाल करोगे तो वो कोल्ड के टेम्परेचर के सामने काफी अच्छा सर्वाइव करता है।
इंडिया जिंक डेफिशिएंसी वाले एरिया में भी आता है, दोनों में, ह्यूमन और सॉइल दोनों के अंदर। और बहुत सारे क्रॉप है जिसमें हाई डेफिशिएंसी ऑफ जिंक दिखता है। ये हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज है। हम पूरे इंडिया में अभी काफी मीटिंगें कर रहे हैं, किसानों के बीच में जाके टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम कर रहे हैं। आज बीटी कॉटन में बुलगाट 2 है, लेकिन आने वाले दिनों में नए नए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बुलगाट 3 RR, ये सब अभी गवर्नमेंट अप्रूवल आने वाले हैं नेक्स्ट आने दिनों में। वी आर रेडी फॉर दैट ऑल्सो। जगह पे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, MP में हमने काफी मीटिंगें करके किसानों में एक्सटेंशन का वर्क करते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग गुड टेक्नोलॉजी टू द फार्मर्स। ये हो गया है हमारी कंपनी और हमारा काम। लेकिन एक सबसे अच्छी बात ये है, हमारा आज वी आर वर्किंग फॉर एक स्टोरी के साथ बताना चाहता हूँ कि कौन सा एक है जो केमिस्ट्री क्लास में टीचर उनके स्टूडेंट को पूछते हैं कि एक लिक्विड है जो बहुत ही आदमी को डुबा देता है, जब सॉलिड फॉर्म में होता है तब वो इमोबिलाइज कर देता है, यानी आदमी को हिलने तक नहीं देता है। और गैस फॉर्म में होता है तब वो आपको बर्न कर देता है, यानी जला देता है। और तब उसमें से सभी को पूछा कि आप ये जानते हो ये ऐसी कोई पदार्थ को हमें पब्लिक के लिए यूज करना चाहिए? तो सभी ने बोला नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बच्चा बोलता है कि नहीं साहब करना चाहिए। तो बोलता है ये कौन सा पदार्थ है? तो उन्होंने बोला कि ये वाटर है। तो हमने हमारे जीवन के लिए बहुत ही होता है पानी। तो हम लोग अभी वाटर कंजर्वेशन पे भी काम कर रहे हैं किसानों को, और बहुत सारे गाँव में करीबन 45 विलेज में मैं खुद जाके किसानों को और सबको गांव को इकट्ठा करके हम लोग अभी चेक डैम बनाने के लिए और पानी वाटर में कंजर्वेशन के काम करते हैं। सिरपुर पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं, जो खानापुरकर साहब, सुरेश खानापुरकर साहब ने रेकमेंड किया था। हमारे गांव से हमने चालू किया, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम योर होम। सो ये एक अच्छा काम किया है और लोगों को इसको काम करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। ये हमारा सर्टिफिकेशन ऑफ एप्रिसिएशन है। वी आर गुड टैक्स पेयर ऑल्सो, दिस इज हैप्पी पार्ट ऑफ आवर कंपनी। देन वी आर गेटिंग द गुड लाइसेंसिंग एंड ऑल द अवार्ड्स विच आर डूइंग गुड। काम करने की वजह से हमारा जो सोशल वर्क्स काम कर रहे हैं हम, जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा कंपनी 2020 के लिए इंडियाज 5000 बेस्ट MSME अवार्ड, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज कंपनी जो होती है उसमें हम लोग आए हुए हैं। हमारा ये सर्टिफिकेट है। हम थैंक्स ऑलवेज बोलना चाहेंगे, पर हम बोलना चाहेंगे किसानों को, रिटर्न टुडे थैंक्स टू द फार्मर्स एंड द फार्म वर्कर्स। नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर, वी फीड द नेशंस एग्रीकल्चर। सो प्लीज सेव द वाटर एंड डोनेट फॉर द वाटर। जल मंदिर हमारा ब्रांड लोगो है, जिसको हम बोलते हैं कि मंदिर मत बनाओ, मस्जिद मत बनाओ, लेकिन जल मंदिर बनाओ, यानी वाटर को कंजर्व करके वापस जमीन में डालो। यही आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा है। तो हमारा ये अल्पगिरी, इसका मीनिंग जर्नी ऑफ स्मॉल टू बिग। हम छोटा सा सीड है, लेकिन आगे बढ़ते, धीरे धीरे आगे बढ़ के कदम से कदम मिला के हम सभी साइंटिस्टों के साथ, हमारे सारे ग्रोवर्स के, किसानों के साथ, हमारे सारे जमीन, पौधे, वातावरण को बैलेंस करते हुए और साथ में नेचर को केयर करते हुए हम आगे फूल बन के सबके बीच में महकना चाहते हैं। दिस इज आवर विजन, सर्विंग टू द नेशन। हमारे भारत माता के साथ हमारा होना चाहिए। हम ऑनेस्टी, हार्डवर्क और करेज के साथ आगे बढ़ रहे। आप लोग सभी ने मेरे को सुना, उसके लिए धन्यवाद। अगर कोई कुछ क्वेश्चन है सीड के रिलेटेड, so I am happy to give the answers and for the technology. Thank you very much. Thanks a lot, sir, for giving Thank me you very much, opportunity. Girish sir, for sharing very valuable information about your company. आपका जो विजन है, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, करेज के साथ साथ आपको सर्विंग टू द नेशन करना है, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ टू फार्मर्स, इंस्पिरेशन फॉर टू न्यू जनरेशन। ये जो भी आपका सपना है जरूर पूरा होगा। आपने जो पेड़ सीड बोया है उसका भी वृक्ष आ गया है और उसके फल भी लग गए और उसकी महक भी आने लग गई है, और की महक तो पूरी भारत में जल्दी आएगी। थैंक यू सर। हम आशा रखते हैं और आपसे सभी पार्टिसिपेंट्स को यहाँ से नॉलेज नहीं, इसके साथ इंस्पिरेशन भी मिला, ऐसा मैं जरूर समझता हूँ। और जो आपने लास्ट में जल मंदिर की बात कही, बड़ी सही बात कही, जिससे
इंसान को, हर देशवासियों को इसके साथ जुड़ना चाहिए. So thank you very much for sponsoring this webinar and sharing your valuable time and knowledge. So thank you very much once again. And those were the questions in the that we will take in the last sessions. Thank you very much, Girish sir. Thank you. So now गिरीश भाई ने सबको मोटिवेट कर दिया है. उसके साथ साथ हमारे साथ अभी जो हमारे साथ नेक्स्ट स्पीकर जुड़े हुए दैट इज डॉक्टर अखिलेश कुमार सर हैज डन. मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक्रोफोन म्यूट पे रखिए. आई रिक्वेस्ट चेतन भाई आपका माइक्रो प्लीज म्यूट पे रख दीजिए. प्लीज म्यूट पे करिए, माइक्रोफोन म्यूट पे रख दीजिए. So now we are with us. Dr. Akhilesh Kumar has done his MSc in biotechnology and PhD from Jadavpur University of Kolkata. He has spent 15 years of his academic research in molecular biologist and worked at Indian Agriculture Research Institute IRI, Pusa, New Delhi. And later on, he got scholarship and worked as a visiting scientist at Volcanic Center in Israel from 2010 to 2014. His academic research is accomplished with a US patent, several international publications, book chapters, and several invited talks in the international conferences. After having exposure of Israeli agri-tech and startup ecosystem, he decided to come back India and promoting high-tech horticulture through his consultancy firm, Eden Horticulture Services. It is a team of agri-professionals from India and Israel, and they provide their services across the country. Today, Dr. Akhil would be talking about the potato seed production in soilless media. So, I request Akhilesh sir to give his presentation. I also welcome on behalf of Indian Nurseryman Association. So, over to you, Akhilesh sir. Thank you, Sachin sir. Thank you very much for warm welcome and introduction. And I'm audible and my screen is audible, visible now? Yeah, you're audible. Okay. You just do the full screen. Yeah, I'm doing that. So good afternoon and good evening, almost I think in about 4 p.m. now. So I'm very thankful to the INA. It's my second lecture to their series out of 35 series. And as you know that the topic is seed for future. So of course my title is confined to the potato seed today. And another thing, this is called a soilless cultivation. The webinar theme is there. So I would be talking what kind of potato seed you can make in the soilless media or without using the soil. So this is a good entrepreneurial model, and now many people are doing such kind of seed production and making good income. So for that purpose, I will be sharing in the brief why, because potato is known very bad crop. Poor farmer, they are not getting good price. They are throwing on the street, but people do not understand what is the difference between potato seed and normal potato. So that I would be trying to explain you people, and how it will be beneficial. That economics also aspect I will share. So these are the recently two news. Upper one is from Uttar Pradesh and the bottom one is from Haryana. Since I am based in Karnal in Haryana, so both places now some people, they are doing very good in this sector and they are making good profit in comparison to traditional potato growers. So if you want to understand what is basic concept behind their business model, then please listen carefully my next slides so that you will be able to understand how to proceed and how to start such kind of business. So as you know, I will not take much time about this introduction. Potato is very, it's known as a poor man crop. It's a good source of energy and vitamins and the starch. So there are many kind of, if you see the pattern of consumption in West Bengal and Assam, Chhattisgarh, that side the people eat more potatoes. So all those things are, you people might be aware how staple crop this is in our diet. And after wheat, rice and corn, this is a fourth crop which is highly consumed among across whole global population. So you see in this picture, I am trying to show the green dots. These are the basically in gigantic plain, and that is major hub of the potato growing in India. The region, because of Gangetic plain, the soil is a sandy, temperature in the northern hemisphere, so we have a very cold temperature, so which is both
two parameters very good for the potato. This is our traditional consumption pattern also. If you see in the Assam and West Bengal, there are also so many dots. So consumption is also very much high. The region that I have done PhD from Calcutta, so I can tell you people, those people, they even use potato in their chicken curry also, just to make the gravy thick. Even in Bangladesh also, the people eat a lot. So you need to understand, but they are growing a lot of potato because after flood, their soil is quite good and rich in nutrient. But the problem is that their temperature, means winter is not there that much. So they are always relying for the potato seed to the Punjab. So in Assam or in Bengal, if you will go, you will find that the seed potato is coming from the Punjab. It is a traditional. Punjab is kind of seed bank of the potato in India. And now in this picture, you see, if you are making any such kind of business model, you need to understand the holistic approach of that particular crop and whatever model you are going to start. So here you can see which part of India, how many days are available for the potato cultivation, because generally potato is a rabi crop. In September, October in North India we sow and we harvest in the February and March. So you can see how many window is there. So that's why if you see the darkened portion, that is too much cold. So sometimes people are able to take two crop in the hilly area, but their problem, their soil is not very sandy. So their productivity is very less than comparison to the plain area like Uttar Pradesh. In Uttar Pradesh grows almost 30% of total Indian potato. So whatever in India total production is there, out of those 100%, 30% is only being grown in the UP. So there is a good crop, and especially in the western UP. But now you have to see why the farmer are not very rich when they are growing huge potato. So they are growing that, especially the consumption purpose, the potato which we are buying and eating in our daily vegetables. So what they can bring the new so that they can make the money. And another thing, right now I think potato has become very cheap, 10 rupees per kg, because the harvesting has come at farmer fields. And if you start with the Punjab to UP, so जो नया आलू आता है बाजार में सबसे पहले नवंबर या दिसंबर में, that is coming from the Punjab region. कि after harvesting of paddy, they do early sowing of the potato and they do early harvesting, and because वो 90 दिन की crop होती है, they harvest and they bring in the market, because at that time there is whatever potato live in the market, that is coming from the cold storage. So that's why we are always paying the new आलू या नया आलू के लिए हम ज्यादा रेट देते हैं. So वो मीठा नहीं होता, cold store वाला मीठा हो जाता है. So you need to understand all these economics. The Punjab farmer are harvesting early, they are bringing their producers and they are getting the price, and then they are using the wheat sowing. देन उसके बाद आप यूपी आ जाइए, हरियाणा आ जाइए, हमारे यहाँ पे फरवरी मार्च में हार्वेस्टिंग होती है. सो दीज आर द पैटर्न, एंड देन यू कैन गो टू बिहार एंड अप टू वेस्ट बंगाल. So and then we put in the storage, because we are growing only 3 to 4 month potato, and some part of like a kharif mein sowing in Hassan in Karnataka, some patches are there very small scale, but basically you see September onwards we are growing here. September, October, November, this is one early, and then some people go for the late one, the Rabi, November, and they harvest the February, March, and after that they put in the cold storage, and we have to make the another supply chain management up to the September and October at least. Then Punjab potato will come again. So this is a supply chain management of potato in the market. So you will be able to understand why the potato was 50 rupee kg 2 months ago, and now why it is 10 rupee kg right now. And I am sure by February or March, once UP farmer will bring their potato, the price will again crash and it will be around 5 or 6 rupee kg. So you need to understand all these dynamics. So I was talking about there are basically two category of potato. One is called table purpose, जिसे हम राशन का आलू कहते हैं, जो हम खाते हैं सब्जियों में, और वही ज्यादा हमारा यूपी किसान ग्रो करता है. Another segment is a processing purpose, जिसके बारे में लोगों को कम नॉलेज होता है, और they believe potato is potato, but it is not the same category. Processing potato is being used for the chips, French fry, flax, there are many other applications. So that's why whatever UP farmer is growing, that potato cannot be processed. So that's why processing companies are not coming. So you need to understand why UP farmer are throwing potato.
या तो उसका फर्मेंटेशन करके वोडका बना लें. There was one concept is coming and I think Russia has this technology, but nothing has happened so far in this direction as per my information. And other things, if you are having processing purpose potato, of course there is a good chances the processing industries will come. आप जितना भी देख लीजिए, मैकन है, पेप्सी है, लेज है, there are many people they are having their own thing. Now even in Karnal we have one company's name is Goodrich. They are processing the potato and exporting to foreign country. So it is possible. So my submission is there. Our farmers should be familiar with these two variety segment and they should opt for the processing rather than the table purpose. And now how the processing is different from the table purpose, there are so many parameters. So one of the parameter you can see the tuber shape, then tuber size, then uski eyes, specific gravity, dry matter, reducing sugar, and after cooking how much discoloration is happened. It's called Maillard reaction. अगर आपका reducing sugar ज्यादा होगा और उसको oil में आप fry करते हैं, so that potato will become black in color. तो इसलिए जो राशन में हम आलू खाते हैं उसको अगर आप चिप्स बनाएंगे and you fry it, you will find that becoming the black in color. लेकिन जो लेस के चिप्स खाते हैं, हम अंकल चिप्स वगैरह खाते हैं, वो चिप्स हमारे व्हाइट होते हैं, वो ब्लैक नहीं पड़ते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग शुगर. एंड ड्राई मैटर फॉर फ्लैट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. पोटैटो में अगर ज्यादा पानी हो गया, सो देयर वोंट बी एनी वैल्यू. ये आप जो प्रोसेस करके बना रहे हैं, इसलिए हमें ड्राई मैटर ज्यादा चाहिए होता है, पानी कम चाहिए होता है. तो दैट्स व्हाई दीज आर द प्रीरिक्विजिट पैरामीटर फॉर द गुड प्रोसेसिंग वैरायटी. Now you see the population production area, you can easily see we are 2030 and 2050. Let's say compare here. So our area is, of course, is a limiting factor, but our production is rising and productivity per ton per hectare. Again, this is a national average. You will be very surprised to know in Haryana and Uttar Pradesh, our normal productivity is 22 ton per hectare. But same potato productivity is around 45 ton per hectare in the Gujarat. So always people work in the Excel sheet, and in agriculture they expect what is productivity per acre, what is the yield. You have to see which crop, which season, which location you are asking this kind of data. So it's a 100% deviation is there, a standard error. So you have to understand in Gujarat the soil is very good, and Mackin company has done 7 years conducted this trial in different part of India, and they found that Gujarat is the best location for processing variety. The region there is sandy soil, so water it will take minimum and more excess water will trickle down. Then it is sandy soil, so tuberization will be very round shape to potato you will be getting. Third region, during winter season in Gujarat you will not found much fog, so more sunlight, more photosynthesis, more productivity. So these are the basic parameter. In Haryana and UP, what happened? We have a fog, and due to fog, we do not get the plenty of sunlight. So you see, means by just changing the location, our productivity data has changed. So, but one good news here in India right now, our production is more than our consumption. They say around 53 metric ton production is there in the potato in India, and our consumption is only the 43 or 44 metric ton. So 10 metric ton is already excess our farmer is growing, and that's why we call कि glut आ गया और किसान फेंक रहा है, स्टोरेज में जगह नहीं है. So what could happen if these people, this 10 metric ton potato, if we can make from table to processing purpose, then of course there is a value addition. But किसानों को पता नहीं है, उनको वो बीज नहीं मिलता है, इसलिए they are confined to the table purpose. Like यूपी का मथुरा के किसान उगाता है 100 कट्टे, 20 कट्टे रख लेता है, 80 कट्टे वो बेच देता है. So you need to understand why our farmer is not growing these seeds. So there are some limitation, and here is the scope. If you make the potato seed, there are the buyer and potato, the 40% cost of potato cultivation is the seed cost. So there is a huge market there. So of course it's a good business model. But there are challenges in the potato seed. It is not a normal farming and growing potato. You need to understand. अगर आप पोटैटो अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं till December mid, January mid, it is fine. Okay, you can see here low aphid infestation chances. Aphids or sap sucking insects. So what happened? Once sudden rise will be in the temperature, the aphid infestation will happen. Aphid क्या करता है? आपकी पत्तियों में sap suck करता है, पंचर करता है.
and if your cell sap will be oozing out from there, the virus will come, and that virus will flow up to the tuber. So that is not a good quality of potato seed. There are 13 different kind of viral infection may happen in your potato seed. So always when you are selling the potato seed at the premium price, आपको इसके साथ वायरस इंडेक्सिंग का एक सर्टिफिकेट लगाना होता है, जो CPRI सिमला एपेक्स बॉडी इन इंडिया वो सारे 13 वायरस के PCR करते हैं और दे आर नेगेटिव, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे बता देते हैं कि दीज आर विदाउट एनी इन्फेस्टेशन. विद दैट सर्टिफिकेट ओनली यू कैन सेल योर पोटैटो सीड. But farmer are not very much aware of these all parameter, quality guidelines, certificate. So they are obviously being cheated by the other company. So you need to be educated how to get the good quality seed. So that's why I am saying that this kind of area is always very dangerous, the red zone, because the temperature is beyond 25 till 35. So that is not very good. And another good thing in potato, the stolon and tuberization, you have to bring the temperature below 20. अगर इसी एरिया में टेम्परेचर 20 से कम नहीं है, वहां पे ट्यूबर बनेंगे नहीं. So in night we need at least below 20 temperature, then only the stolon formation will start. 30 degree centigrade पे stolon formation का वो जो size होता है, that will be halted. So there are many things. It is not a normal potato crop. It's a very complicated science. You need to understand. I personally spent 4 years in Israel and I have worked on potato, but it was as a molecular biologist. I worked transgenic approach. Sometime आप लोगों ने देखा होगा potato हरे रंग का हो जाता है if it exposed to sunlight. So I worked on that aspect. I made a publication and whatever the being a scientist a person does. I did all those things. But once I came back India and I see what our potato farmers are struggling, I feel this is our main problem. So what I am doing, it is not relevant to the potato growers. So I need to do something applied which is can solve this potato glut problem in India. So that's why I decided to work in applied way, and that's why through consultancy and all this, my company, we are providing such kind of knowledge. So I realized there is a need of potato seed rather than making such kind of molecular work. This is a requirement for our farmer. So our farmer do not get good quality seeds. Generally potato seeds जैसे जैसे पुराने होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. So आपको सर्टिफाइड सीड यूज करने होते हैं, देन आपके पास डिजीज के इन्फेस्टेशंस कम होंगे और प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगी. बट किसान को जब पोटैटो के सीड नहीं मिलते हैं, सो ही प्रिज्यूम कि जो पोटैटो उसने लगाया है इसी को बार बार मल्टीप्लाई करना, क्योंकि पोटैटो सीड वही है. बट इट इज नॉट ट्रू, इट्स अ मिथ एक्चुअली. इन यूपी आवर फार्मर यूज अप टू 8-10 जनरेशन. दैट्स व्हाई देयर प्रोडक्टिविटी इज क्वाइट लो. देन लैक ऑफ लो कॉस्ट एंड लो रिस्क टेक्नोलॉजी. अब सीड बनाने में इन्वेस्टमेंट आता है जो हमारे किसानों के पास नहीं है. तो जनरली ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर सीड प्रोडक्शन के लिए शुड बी help are supported by the government agencies, as it has been done in the Punjab initially, and then many private people came and started to do, and now in Haryana also it has started with the one project Shyamgarh in Potato Technology Center, and now many people are budding entrepreneurs are coming. So I will show you some picture from there also. And the failure of a state government. किसी भी सीड इंडस्ट्रीज में कहते हैं 25% आपका सीड रिप्लेसमेंट होना चाहिए हर साल. पोटैटो में हार्डली 8% ही हमारा सीड रिप्लेसमेंट है, इवन ये जो गवर्नमेंट के डेटा है. सो ऑलरेडी हम ऑलमोस्ट 1/3 है, तो 2/3 फार्मर हमारा सीड मिलता ही नहीं है या पुराने सीड पे ही रिलाई करता है. एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एंड मैकेनाइजेशन, दैट इज अनदर हर्डल. देन इंक्रीज लेबर प्रॉब्लम, बिकॉज पोटैटो में सोइंग है वो मैकेनाइजेशन नहीं है, तो मैनुअली में लेबर कॉस्ट काफी पड़ जाती है. ईच एंड एवरी प्लांट सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑल दिस थिंग्स. देन नॉन एडाप्टेशन ऑफ टिश्यू कल्चर के बारे में लोगों को पता नहीं है, इसलिए हमेशा वो जो डिजीज, आई फ्रीक्वेंटली विजिट सम काइंड ऑफ पोटैटो ग्रोवर फील्ड, आई फाउंड दैट हाफ ऑफ द सीड्स इज वाज द डिजीज विद द वायरस, एंड दैट्स व्हाई दे आर हैविंग द वायरस इन्फेक्शन इन देयर फील्ड. सो दे डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ नॉलेज, दैट्स व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग विद आवर क्वालिटी एस्पेक्ट्स. So now question is what we should do. So we should adopt the high-tech technology to get the good quality seeds. That seed will be not only required in India, that many people like आपको ITC के company Technico and many other company, they are exporting potato seed. They are making seeds in India because we have good climate for the potato seed production, and they are exporting to other country, African country, and they are growing potato there.
जैसे कि हम बंगाल में सीड नहीं बना सकते, तो बंगाल और असम के लिए सीड पंजाब और हरियाणा से जाता है, वैसे अदर इंटरनेशनल मार्केट भी पोटेंशियल है. कंट्री हैविंग एक्सप्लोसिव इंक्रीज एज अ पोटैटो न्यू क्रॉप, यू नो पोटैटो इज क्वाइट बल्की, सो इसका ट्रांसपोर्टेशन बड़ा मुश्किल होता है. तो ईच एंड एवरी कंट्री वांट की पोटैटो अगर हमारे क्लाइमेट हो जाए तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगी. सो दैट्स व्हाई पोटैटो सीड्स की काफी वैल्यू है. अर्ली सप्लाई ऑफ ब्रीडर सीड, कोई नई वैरायटी अगर आई है मार्केट में तो इमीडिएटली लोगों को चाहिए होता है. जैसे प्रोसेसिंग कोई नई वैरायटी आ गई, नाउ एवरीबॉडी वांट दैट सीड, बट एक सीड बनने में जो अभी हमारा ट्रेडिशनल इंडियन गवर्नमेंट का गाइडलाइन है 10 to 12 years it takes almost. So that's very difficult, क्योंकि आप each generation in 1 year only you can grow to potato 1 generation. So आपको 6 जनरेशन तो ऐसे लग गई जब सर्टिफाइड सीड तक आएंगे. तो इसलिए ये चैलेंजेस हैं. तो इसलिए हाईटेक में करके हम साल में 2 साइकिल ग्रो कर सकते हैं पोटैटो, तो वो टाइम हमारा रिड्यूस हो जाता है. तो इजिली हम 4 to 5 ईयर में नए सीड दे पाएंगे अपने किसानों को. देन इम्प्रूव ट्यूबर क्वालिटी. ओके, अगर वायरस नहीं होगा तो अच्छी प्रोडक्टिविटी आएगी और उस पर डिजनरेशन डिजीज का मैनेजमेंट इजी हो जाएगा. यूटिलाइज द रिसोर्सेज एंड ट्रेंड मैन पावर, that is always required, you cannot exclude the manpower. So this is one of the case studies. This Neil country, the new variety has come, and now many people from this variety are released from CPRI Shimla कि हमें ये पर्पल या नीला लाटो पोटैटो चाहिए. बट प्रॉब्लम इज दैट फार्मर डू नॉट गेट द गुड क्वालिटी सीड्स. उनके पास है ही नहीं ये सीड्स, और प्रोसेसिंग के सीड बिल्कुल नहीं मिलते उनको. वो जो होता है सीपीआरआई से प्राइवेट लोग ले जाते हैं, प्राइवेट लोग ही अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं और उसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से वो प्रोसेसिंग करा के अपना चिप्स या जो भी बेच रहे हैं जिसपे वो हाई हल्ला होता है कि इन्होंने 4 रुपए किलो चिप्स बना के बेच दिया. तो वो इकोनॉमिक समझिए, उनके सीड अलग हैं, उनका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस अलग है, उनका सप्लाई चेन मॉडल अलग है. दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग द मनी. अभी आपको पता हो गुजरात में पेप्सी ने किसी FC4 वैरायटी के सीड थे, तो ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि दे हैव डन कॉन्ट्रैक्ट विद द वन फार्मर बट नेबरिंग फार्मर आर आल्सो ग्रोइंग, सो दे हैव सूड 4 फार्मर फॉर 1 crore rupees compensation. So these kind of things become very big when you are dealing in the contract farming. So why not to educate our own people to tap these opportunities? This is our country, this is our own variety. Why we cannot help our government to multiply these kind of seeds and we can make the income? So these seeds they are supposed to be high antioxidant and because of carotenoid and coloring agent, all these things. So it is highly in demand. Of course, if somebody is selling this potato, usually he can fetch it better than the normal traditional potato price. But who will provide the seed? So there are lots of hurdle. If you see the one farmer, traditional farmer who is growing potato and one private company. So how they work, their business model work. As I told you कि एक इंश्योरेंस का इशू आता है. एग्री कंपनी से वो सीड खरीदेगा, लोन लेगा या उधार पे लेगा, क्योंकि 40% कॉस्ट आपकी पोटैटो सीड्स की होती है. देन बैंक्स का एक इन्वॉल्वमेंट होता है. इनपुट कंपनी फर्टिलाइजर्स की बात हो गई. उसके बाद स्टोरेज का कोल्ड स्टोरेज उसके पास नहीं है. तो इसलिए इस सारे नेक्सस में ना फार्मर सबसे ठगा हुआ महसूस करता है. ही हैज नो अदर ऑप्शन, ही कैन नॉट बिल्ड हिज ओन वेयर हाउस. बट प्राइवेट कंपनी, they are having good collaboration with the government bodies and they know which is the best variety, what is in the industry requirement and where is the potential market. तो ये पेप्सी के 3 प्लांट थे, वो 3 प्लांट और इंडिया में लगा रहे हैं. So one segment is seeing the huge potential and on the other hand our farmer is still deprived. So we need to see where is the balancing act, how we can strengthen our farming community. They should come in the cooperative model and one cooperative should make a seeds and that cooperative provide all these seeds to their own farming community. So in this way we can hold such employment business and then you sell almost double price like Pepsi, almost 10 rupees 50 paise per kg they provide if you are growing their variety. But our farmer never get this price in the normal mandi in February, March. Region, Pepsi make, yeah, any company, they make starch. This is also good source of potato. Starch से काफी उनका प्लास्टिक हो रहा है और भी कई चीजें कन्फेक्शनरी में यूज हो रहे हैं. फ्राइड, फ्रेंच फ्राई जो आप खाते हैं मैकडोनल्ड में, स्नैक्स या चिप्स जिसको कह सकते हैं, ये कुक्ड हैं. जैसे अभी जैन इरिगेशन इज वर्किंग ऑन द frozen cubes of the potato. So now that time will be very old. Okay, now ladies will be peeling the potato, cutting and then cooking. Now the frozen bricks will come potato. You just put in the gravy and ready to eat meal will be within instantly noodle. It will be like ready to eat.
and then dried and granule. This is flax. आप दिल्ली में हैं तो बिट्टू टिक्की के आप लोग खाते होंगे, आलू टिक्की. So those people, you are using such kind of flour after dehydrating the potato, and that's why dry matter is important here. That's why they want more than 20% should be dry matter. So these are the application of the processing variety. This cannot be possible with the normal ration palla या table purpose का जो variety मैंने बोला. Now you come to the seed. अब इतना तो मैंने आपको justify कर दिया कि processing variety का potato is more potential from business aspects. Now you see the how to get the seeds. So generally we are making the micro plant in the culture tube, in the tissue culture. So here one culture tube you can get. Suppose नीलकंठ variety का किसी को seed बनाना है, so he and she should go CPRE Shimla and ask them that I want 5 culture tube or 10 culture tube of particular variety, processing variety, and you bring it 5 rupees one culture tube, bring at your facility, do the tissue culture या आप रेंट पे कराएं उसको, and then उसको aeroponic system में आप ऐसे देख रहे हैं, इसको हवा में उगाते हैं. That's why I call soilless system. And then one tuber is mini tuber like a pearl is cost 8 to 10 rupees. So it is not a normal tuber, and that's why many hydroponic people say in aeroponic you can grow anything. In aeroponic you can grow anything is true, but you cannot bring the ROI with anything. But such kind of infrastructure for potato seed can bring your ROI if you know where this seed has to be sent, because these seeds will be not purchased here. This will be not, farmer will be not buying this seed. These are called breeder seed or G0 seed in aeroponic technology. And then these G0 seeds, small tuber, we put in the net house, in the protected cultivation. Always we have a doubt that only potato protected cultivation greenhouse is for the tomato, capsicum and bell pepper, cucumber, these 3 major crops. But you see the potato seed that can be also grown in the net house because we have to protect from the virus. So that's why we are growing in this structure. The funny part, in India still people are making standard greenhouse for the potato seed cultivation. I don't think so. We don't need, because potato is not growing vertically. So we can reduce the height and it's a winter crop. So we can minimize the greenhouse cost for the potato seed production. There must be the guidelines should come for the potato grower so that the farmer burden will be the less. Though government provides subsidy, but if you modify the specification, it will further help them to reduce the cost. And once you harvest the G1 seed from here, so now you take this seed to open field. And again, there is a state certifying agency. There are the committee scouting the 20 aphids से ज्यादा आगे आपके 100 कंपाउंड लीड्स पे, तो आपको इमीडिएटली उसको हर्बिसाइड से करके उसको मारना होता है, नहीं तो वो सारा वायरस इन्फेक्शन ट्यूबर में चला जाएगा. So there is a proper guideline. So under with the government, then there is a yellow tagging and golden tagging, some kind of procedure there as per the state certifying agency, and then only you can claim that you have potato seed. This is G2 generation, G1 generation or G0 generation, and you can sell to the farmer at the premium price. So this is a summary. This is like micro plant. You will multiply in the culture room. आपने इसको नेट हाउस में ग्रो किया. नेट हाउस से जो आपने ये किया, इसको मिनी ट्यूबर बोलते हैं, छोटे छोटे ट्यूबर होते हैं. इसको फील्ड में लगाएंगे तो इससे फिर G1 बनेगा. इसके बाद नेक्स्ट ईयर लगाएंगे G2 मिलेगा. देन यहाँ से जो मिलता है दैट इज कॉल्ड सर्टिफाइड सीड. So from this to this, it generally used to take 6 to 7 years earlier, because each generation will take one winter. So you cannot grow in twice in the winter. These are the limitations in the potato seed. तो इसलिए हम नहीं दे पाते क्योंकि फार्मर करता ही नहीं है, सारा गवर्नमेंट को अपने स्तर पे ही करना पड़ता है. So this is a summary sheet. आपको जितना अब तक आया मैंने बताया. You need to very understand कि इसमें बिजनेस कहाँ छुपा है. So as I said, माइक्रो प्रोपेगेशन टिश्यू कल्चर से आप लाते हैं एक प्लांट को. आप फरवरी से, क्योंकि वो इन विट्रो होगा लेबोरेटरी कंडीशन में, 6 मंथ तक कंटिन्यूअस 6 to 8 साइकिल आप उसको मल्टीप्लाई करिए. सो एक कल्चर ट्यूब से आपको कई हजार माइक्रो प्लांट आपके तैयार हो जाएंगे इन विट्रो. नाउ यू हार्डन इन द soilless मीडिया, दैट इज कोकोपीट मीडिया, दैट व्हाट वी आर टॉकिंग, बिकॉज सॉइल में सॉइल बोर्न डिजीज होती है. तो वी यूज हियर soilless मीडिया. उसमें हम हार्डनिंग करते हैं और इससे जो ट्यूबर बनेगा फर्स्ट ईयर में उसको हम उसमें लगाते हैं नेट हाउस में. तो वी कॉल दिस सीड ब्रीडर सीड.
So transplanting in the trough inside net house in soilless media and coco peat, one plant give generally 6 tuber here, and each breeder tuber can be sell minimum 6 rupees अगर ये टेबल पर्पज है. अगर ये प्रोसेसिंग का है तो 8 to 10 rupees you can sell. Now the next season you bring these seeds to the net house, and 40,000 breeder seed will require in 1 acre area. So very close spacing में हम इसे ग्रो करते हैं, और इससे जो भी हार्वेस्टिंग आएगा that we call F1, and these F1 seeds if you have the certificate you can sell at least 50 rupees per kg, and 40,000 tubers से आपको minimum 100 कुंटल yield आ जाता है. Again the grading will be the one parameter here, क्योंकि आप जब आलू लगाते हैं तो फर्स्ट ट्यूबर जो बनता है, जो आप ट्यूबर लगाते हैं उसको मदर ट्यूबर बोलते हैं, और जो पहला ट्यूबर बनता है उसको एलाइट ट्यूबर बोलते हैं. तो एलाइट ट्यूबर विल बी ऑलवेज बिग इन साइज, रेस्ट ट्यूबर विल बी स्मॉलर इन साइज. देन नेक्स्ट सीजन में आप जाएंगे, अगर आपके पास ये नेट हाउस नहीं है, आपने बोला ठीक है मैं किसान हूं और मैं ये 52 रुपीज वाला लेके मैं जनरेशन 2 तैयार करता हूं, तो आप F2 तैयार कर सकते हैं. ये ओपन फील्ड में हो जाएगा, and that cost is 32 rupees kg. So again here seed rate is 14 quintal per acre, and you can get easily 120 quintal average yield. And if somebody is not even able to buy this 52 rupees, so they can buy 32 rupees and they can help in this multiplication 4th year. So as per your investment, as per your ability, as per your capability, you can decide at which level you have to involve yourself for the potato seed production. So generally at the end what farmer is buying 14 rupee kg this seed. This is called certified seed. So one government is having certification easily. But what farmer does, they grow only the normal traditional seeds. They have no idea about the traceability, who is making, how is making, which generation it is, and they are selling at 4 to 5 rupees. So all economics is hidden here. If you are doing in the proper way potato seed production, and especially the breeder seed has to be done here, breeder 1 or F1, you can go in the soilless media, and this is happening in the open field. So accordingly the rate is high. So now you see the contribution in the productivity, which factor affect, as I said, Gujarat and UP, Haryana model. Like a hilly area, the clay soil is very hard soil they have. So tuber formation is not that much easy. So their productivity is average only 13 ton per hectare. One plant can give you only 4 to 5 tuber. So because of hilly area. But in the plain area, we can get easily like Haryana, UP, 24 ton per hectare. Now here you can say 6 ton contribution is only because of disease management, late blight, and if you give our farmer quality seed, we have potential to increase our average production plus 8 ton. मतलब 8 टन के जो प्रोडक्शन का हमारा डिक्लाइन हो रहा है हमारा एवरेज में, दैट बिकॉज आवर फार्मर इज नॉट गेटिंग क्वालिटी सीड. सो दैट वे पोटैटो सीड कैन प्ले अ बिग रोल टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग वैरायटी सीड्स, एंड दे कैन मेक द इनकम आल्सो, एंड इट विल हेल्प इन आवर नेशन export potential also. If once you have processed, because export of potato as such is very challenging. It's a bulky item, it's a perishable item. If one potato will damage, it will make the humidity, it needs a cold storage. But once you have processed it in the form of chips, flax, easily you can export to any country. So this should be our model. Divert all the farmer who are doing facing glut problem to the processing variety, and government should promote the processing industry to process it and then provide the market to export it. Then we can come up with the solution what potato farmer are facing in India. Now the people always have myth ki cold storage, but there are different cold storage for different purpose. If you are going to put the seed potato, then the temperature is only 2 to 4 degree, because you are not going to give them sprouting. हमारे यूपी में 90% कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस की तरह यूज होते हैं जो राशन वाले आलू को रखने के लिए हैं. So we are again very weak in such kind of specifications. और जो पोटैटो हम खाते हैं उस पे CIPC का ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी मैं आके बताऊंगा आपको. तो सीड पोटैटो पे CIPC का ट्रीटमेंट नहीं होता है. That has to be 2 to 4 degree centigrade. Potato for fresh consumption, somebody put 5, somebody 10. It depends कि how long you want to store, because जितना आप ठंडा रखेंगे उतना ज्यादा आपके एनर्जी कंजम्पशन या एनर्जी का बर्डन या बिल ज्यादा आता है, तो लोग उतना रखते नहीं है. और ये हमेशा ही होता है जब क्रॉप खराब होती है तो देयर इज अ फाइट और डिस्प्यूट बिटवीन द ग्रोवर
and the cold house का जो owner होता है. So there is a one solution also I will explain you. तो पोटैटो फॉर चिपिंग 7 to 10 डिग्री, क्योंकि आप अगर इसको ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो स्टार्च का डिग्रेडेशन हो जाएगा रिड्यूसिंग शुगर में, और वो फिर काला काला फ्राई करने में बनाएगा. तो 7 to 10 डिग्री दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर. पोटैटो फॉर फ्रेंच फ्राई अगेन 5 to 8 डिग्री, एंड पोटैटो फॉर ग्रेन्यूल्स और मैश या फ्लैक्स जो कहते हैं 5 से 7 डिग्री. इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 95% रखते हैं, एंड CO2 कंसंट्रेशन 1% तक हो सकता है. So these are the ideal condition for the potato storage. This CIPC I was telling, ये यूरोपियन कंट्री में बैन है. इवन आई वाज इन इजराइल, ये वहां पे भी यूज नहीं करते हैं. बेसिकली आप पोटैटो को लाकर रख देते हैं, घर में भी रखते हैं, तो उसमें स्प्राउटिंग हो जाती है. सो दिस व्हाट इट डज इज दिस केमिकल दैट बर्न्ड दैट स्प्राउटिंग. सो आपकी स्टोरेबिलिटी बढ़ जाती है आलू की, क्योंकि हमें खाना तो साल भर आलू है, उगाना सिर्फ 4 महीने है. तो ये चैलेंज है पोटैटो इंडस्ट्री के सामने. तो दैट्स व्हाई वी यूज अ CIPC. But some European countries say this is a mutagen and is causing cancer and we should not use it. But on the other hand, Indian scientists say this is safe and it's very cheap for India. It costs only 40 paise per kg, and it's kind of volatile gas. Once it is coming outside from the cold storage, it is going to evaporate, and it is only in the skin, and most of the Indian people, they peel the skin and then we consume the potato. So they are their own justification. But being entrepreneur, if somebody want to work on this domain also, अगर आप कोई और सब्स्टिट्यूट देते हैं इस चीज का, so you can sell your potato at premium price. Like इजराइल में मिंट स्प्रे यूज करते हैं फॉर सेम पर्पज. सो मिंट स्प्रे भी उनकी जो आईज होती है उसको बर्न कर देता है. दैट आल्सो एक्ट एज एंटी स्प्राउटिंग. बट दिस इज नॉट CIPC, so they are getting the good price for this potato. So these storage aspect, that's why I shared. So now in summary, how we can increase the productivity. So of course suitable site selection, as I said, गुजरात का जो डीसा एरिया है, कुछ मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट है, उधर बहुत अच्छा हब बन चुका है और सारा पोटैटो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से बाय शिप. सो दे आर लीडिंग इन द प्रोसेसिंग सेगमेंट. दे आर यूजिंग ड्रिप इरिगेशन, तो उससे वो प्रिसाइज इरिगेशन देते हैं, उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आपकी क्वालिटी पे. हमारे फ्लड इरिगेशन होती है, ज्यादा पानी देने से वाटर कंटेंट बढ़ जाता है, उसकी स्टोरेबिलिटी कम हो जाती है. सर्टिफाइड सीड क्वालिटी नहीं मिलती है, यूपी में करना चाहिए. आई थिंक देयर वर रिसेंटली आई हैड इंटरेक्शन विद द one person department horticulture that 25,000 rupees per hectare they are giving the assistance. If some farmer is going to associate with the UP government, they will provide this kind of facility. Productive and processing variety, जैसा मैंने कहा, जो जो वैरायटी के चार्ट दिखाए थे आपको, जैसे अभी तक कुफरी जो वर्ड है वो CPRE से जो वैरायटी डेवलप होती है उसमें K लगा होता है, that means from India. But there are some variety now it has come from abroad, like LR, Legi Rosetta, Solentum, one more variety FC4 Pepsi has brought. So these are many varieties coming from the abroad also. So we have to see how we can get the access, or we can just multiply our indigenous variety and we can make our own processing industry. Micro irrigation for precise irrigation. Nutrient management, again nitrogen play a very critical role in the storability. Sowing and harvesting methodology, mechanism is very much needed. Weather station, when blight आ रहा है या इन्फेस्टेशन आ रहा है, उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी टेम्परेचर के प्रोजेक्शंस में, स्पेशली इन द जनवरी. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, दिस इज अंदर बिग डिबेट इशू कि आप कैसे कर सकते हैं. बड़ा पोटैटो एज अ सीड में नहीं जाता है, वो फिर राशन में बिकता है, और सारे आलू यूनिफॉर्म के नहीं हो सकते. दिस इज एग्रीकल्चर, दिस इज नॉट अ some physical factory. So that's why always contact farming is in debate. If two people are doing contact, you should buy my all product, or if you are buying only A plus, then what I will do with the B and C grade. So that's always this kind of issue is big concern for the farmer. Packaging and transportation, this is also big issue. India में जो कट्टे रखते हैं बड़ा ही ट्रेडिशनल है, but now if you go abroad, they are using the wooden box, and that boxes are having proper ventilation, so you can further increase your storability if you use wooden box. And tuber treatment, as I said, CIPC is one of the option. So the summary is that we need a good quality of potato seed because of two purpose. Okay, once we have to increase our productivity, अगर सीड अच्छा होगा तो प्रोजनी अच्छी होगी, और जो हमारे जो डिजीज मैनेजमेंट है वो हमारा मैनेज इजी हो जाएगा. So ultimately that also going to help in the enhance the production. So now soilless कल्टीवेशन में जो पोटैटो सीड की बात कर रहे हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड आप देख रहे हैं, जैसे ब्रीडर सीड मंगाया और इसको हमने
मिट्टी में लगा दिया. But now you see the aeroponic technology has come. Here we are putting the माइक्रो प्लांट जो टिश्यू कल्चर रेज है उसको हैंग कर दिया ऐसे और इसको हमने डार्क जोन में सिट कर दिया. और नाउ दिस root is growing in the air and there is a modified stem which is stolen. You can see a small tuber is making a formation here. So once plant will do the photosynthesis or tuberation will happen, at any time you can lift it and you can harvest it as per the ideal size, which was not possible in this ट्रेडिशनल मेथड. अगर आप किसी प्लांट को मिट्टी से तोड़ते हैं तो या तो ट्यूबर टूट जाएगा या उसको दोबारा रीप्लांट नहीं कर पाएंगे. So this is a limitations. You cannot control the grading here, but you can control and you can real time you can harvest here and as per your requirement. So what is aeroponic? Generally plants are growing in the environment which is created by air mist, no media, no soil, no coco pit here, and we put the NPK spray here from nozzles. So that's why it is growing, and inside the greenhouse we grow this plant. So this is basically aeroponic in simpler method. And now you see the is from PTC Shamgarh Karnar, Haryana Horticulture has invested almost 2 crore rupees investment, and they have made a 400 each this 4 unit, and here they are able to see 2 million breeder sheet they can make annually. And lots of foreign companies like processing company, they are signing with MOU with them. So these people will make the revenue also for the department, and they will give the processing people also, and processing people will be more than happy to do the business in their collaboration, because this is a huge task. And I am expecting such type of infrastructure should come in UP, because UP is a hub of the potato, and because of such kind of infrastructure, very soon you will realize Punjab monopoly in the potato seed will be become, and now Haryana is coming to compete with them because of climate change also. In Punjab, the winter is becoming very shortened. So there are lots of hurdle if you see climate expert also. So these are styrofoam. Here you can see the nozzles, and here we do the transplantation of the tissue culture plant like this, and slowly plant will grow, and later stage you will see like this. So if you want to harvest the tuber, you just lift this styrofoam and you can pluck and buy this tuber and you can put it back. So this is a normal standard without in the growing condition, and this is when this is at harvesting stage. So this is a streamline plant will be like this it will be growing. The photosynthesis area and leaf will become in size. Up and down you can see the small tuber, big tuber, and this tuber, and this is a total morphology of the plant. So what is the benefit of putting this much investment? High multiplication rate, avoidance of soil pathogen, cost effectiveness, because we are able to grow now 2 season crop, because we are growing such kind of thing inside the cooling fan pad system. So we are able to extend the crop cycle of the potato, and we will able to control the aphid infestation, because this is the protected cultivation. And we are saving in vitro plant net also, because पहले net house में काफी mortality ज़्यादा होती थी, यहाँ पे कम होती है. Moreover, saving the water, because it's precision farming, micro irrigation, and natural minerals and desired size of mini tuber, which is very much important, जो grading के aspects में बता रहा था. So now you can see here how uniform these things, and these are not uniform. Here one plant gave 8 to 12 tuber per plant. Here you can get 40 to 45. Even some variety has given 60 mini tuber also. So this is the optimum size. So these are the benefit of this existing system and this soilless aeroponic system. And now the another method has come. People are working on this also. Rather than suppose aeroponic is very costly, but soilless is cutting method. You just cut the plant and micro device, because IoT is always in the big debate nowadays. So this solentum is a one device, is a soil antenna. What it does, farmer grow while potato sowing, they put in the soil as such with the potato, okay, and they will cover, and it will be configured with your smartphone. So what? नहीं अरे भाई अर्षद साहब आपका माइक्रोफोन प्लीज म्यूट कर दीजिए, प्लीज. अखिलेश सर प्लीज कंटिन्यू.
Akhilesh sir, please continue. I think you have lost the connection. मेरे ख्याल से Dr. Akhilesh has lost his connection. जब तक वो join होते हैं, तब तक I request all the participants to those who have any queries to our speakers, especially to Girish Patel ji, they are free to ask. Manji ji, am I audible? Manji ji. शायद अखिलेश जी ज्वाइन जो कर चुके. अखिलेश सर, कैन यू, आई एम ऑडिबल? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. अलंकृता मैडम, आई एम ऑडिबल? नो. Yes, sir. अखिलेश कुमार सर जुड़ चुके हैं क्या हमारे साथ? हेलो. I don't think, sir. He's not in the room. Okay. Hmm. So I think you have lost the connection. सभी participants से मेरा request है, अगर उनके कोई questions हो तो our speakers are with us now. अखिलेश सर थोड़ी जुड़ जाएंगे हमारे साथ. तो those who have any question, they are free to ask. I think there is no question from anyone. So गिरीश सर कुछ ऐड करना चाहेंगे आप आपके आज के वेबिनार में? Sachin ji, he will join. Okay, okay, just we will wait. तब तक गिरीश सर, can you share some information regarding seeds and related to the crops? Akhil sir, please continue. Yeah, thank you. So I hope this slide you people were there. I was talking about this IoT-based device which can be used as a probe in the soil. One farmer can use it. It can be, put in the soil just like a normal mother tuber of the soil, and that can configure with your mobile, and with the real-time monitoring temperature, moisture, and CO2 level, it can give you. It's not only at the field level. Once the potato will be harvested, it can put in the bag of also, and you put in the cold storage also. So from the cold storage, if the real time monitoring you can do कि अगर वहाँ कोई power interruption है, so आपका अगर आलू का temperature बढ़ रहा है तो damage होगा, तो immediately you can get the alert. So this kind of simple device can also help a lot in the quality control. Similarly, एक अलग प्रॉब्लम आता है किसानों को कि मुझे कब क्रॉप हार्वेस्ट करनी है, कितना यील्ड आ जाएगा, क्योंकि पोटैटो जितना दिन रखेंगे आप उतना वो साइज में बढ़ेगा. सो इफ यू थिंक ओनली इन द टर्म्स ऑफ द यील्ड, so that is a one parameter, but as you long you will wait, the market price will be coming down. So you have to be very smart enough to what is the right time. So this is another kind of device. Just have a random sampling, put on this blue plain paper, and give the some basic parameter. What is your seed rate? How old this crop? It will just measure this tuber size, and they have developed the algorithm, and it can tell you how much expected yield you can get from your potato field.
So such kind of IoT device is also very much helpful. This is another device, Soul Flyer. अगर किसी आप processing company में जाते हैं, so they see the how evenly your starch distribution is there, or reducing sugar. अगर आपका irrigation सही है, sandy soil है, तो उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नहीं तो आपका फ्राई करने पे कहीं पे नीला और कहीं पे काला पड़ेगा. तो दैट्स काइंड ऑफ स्कैनिंग. So these are IoT based. Just I want to say, because many young people are associated with the INA, and being engineering background and some other discipline people are coming. So please think in this direction also. It's a good avenue for research. And this is my summary. What actually I was doing in Israel, I published a good paper in the Planta, and this is our one farmer. He got training and help from us, and now he is growing potato in Haryana and sending in Odisha. And just 1 month before, he texted me, sir, all these your credit. So I was confined to scientific publication. Now I am doing scientific contribution. So this should be the goal of any budding entrepreneur, to make a success story. I'm sorry, means because of internet connection, I took little bit more time. So whatever I was given that time I tried to confine all my information which I wanted to share with you people. And if any question, I would be more than happy to answer. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Akhilesh sir. You have shared a very valuable information on potato, how we can use in hydroponics. Thank you very much. You have used specifically use the aeroponics. Thank you very much once again. Now this forum is for question and answer. The participants, those who have any question, they are free to ask. I think there is one question for Girishji. These seeds you sell can be used for hydroponics or soil only soils. Girishji. Yes, sir. आपके लिए What is the question? Question है, whatever the seeds you are selling, that can be used for hydroponics or only for soil media? So far not tried, sir. हमने कोई ऐसा हाइड्रोपोनिक्स के लिए ट्राई नहीं किया, not in our R&D station. So हम लोग अभी भी किसानों के बीच में सॉइल के मीडियम में ही काम कर रहे हैं, और उसी पे भी अभी एक्सेलेंट पार्ट में जा रहे हैं. तो so far we have not done any hydroponics things in our seeds. Thank you very much. Is there any more question? May I ask one question to Girishji? Sir. Yeah. Sachin sir. I'm another speaker, but I was very much good to see that you are working on the cotton also. I would like to know your opinions about the BT cotton in Gujarat area, because there is lots of myth that BT cotton is no more successful in Maharashtra, also in Gujarat. And since you are working in the cotton, so how you see the impact of BT cotton after 2006-07 till now? And what is your opinion, whether we should go for the BT or we should strengthen our breeding program for indigenous variety? BT cotton is an excellent technology, sir. पहली बात तो ये है, और किसानों को खासतौर पे 2000 से 2012 तक किसानों को बहुत ही अच्छा यील्ड मिला, और किसान काफी हैप्पी भी हुए. बहुत ये रियलिटी है कि किसान BT कॉटन से बहुत ऊपर आया है, गुजरात, महाराष्ट्र, सभी जगह पे. 2014 के बाद अभी पिंक बॉलवर्म हैवॉक हो चुका है, और BT कॉटन थोड़ा रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो गया. रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो गया, उसमें 2-3 रीजन है. खासतौर पे मेन रीजन ये होता है कि जो नॉन BT का बॉर्डर लाइन पे लगाना चाहिए, वो किसानों ने नहीं लगाया. उसके लिए उनको हम ब्लेम भी नहीं कर सके उसने क्यों नहीं लगाया, या हम सीड कंपनियां होके हमने कुछ नहीं किया, ऐसा भी नहीं. हमने भी बीच में पाउच दिया 120 ग्राम्स का लगाने के लिए, ताकि रेजिस्टेंसी डेवलप ना हो क्रॉप के अंदर, लार्वा के अंदर. वो क्यों हो गया है कि हमारे पास लैंड होल्डिंग कम होती है किसानों के पास. ये फैक्ट है, रियलिटी फैक्ट है कि हमारे किसान 2 एकड़ का है, 5 एकड़ का है, 5 बीघा का भी है, तो वो कभी भी नॉन BT के लिए बॉर्डर का नहीं लगाता है. तो उस वजह से बाजू वाला किसान भी नहीं लगाया, वो भी नहीं लगाया, कोई नहीं लगाया. इसलिए वो जो नॉन BT खाद के पेस्ट के अंदर जो रिसेसिव जीन आ जाता है जो रेजिस्टेंस के लिए, तो वो बाद में BT खाता है, तो वो फिर रिसेसिव जीन बन के वो मर जाता है. लेकिन वो BT खा के थोड़ा रेजिस्टेंस आ गया. बट right now there is a technology available in the USA, Brazil, Australia and Argentina that is called Bolgat 3, and this is a new poison that is called VIP, vegetative insecticidal protein. So वो जो जहर है वो अभी पिंक बॉलवर्म पे काम कर रहा है.
So it's gives resistancy again 2, 3, 4. Actually BT cotton में there are so many genes. आज के तारीख में 349 genes ready है बन के. We are using just 2 gene, cry1 AC, cry2. There is 3 kind of poison in BT cotton. वो जो साइटोलेटिक फॉर्म है फर्स्ट पॉइजन जिसमें 11 जीन तैयार है. वीप फॉर्म यानी वेजिटेटिव इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन उसमें 110 जितने जीन्स रेडी है और 242 समथिंग जीन जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में है जो क्रायोन बोलते हैं. सो लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप एंड हैविंग. इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है या इससे कोई बकरा खाया कोई मर गया, आदमी खाया कोई मर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी भी ये टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल है. 20 ईयर्स से इंडिया यूज कर रहा है अराउंड द वर्ल्ड, सब जगह पे अच्छा है. लेकिन somehow some people are saying that it is not good and this that, but it is not like that. अगर टेक्नोलॉजी आज लार्वा है, पेस्ट है, वो उसका काम करेगा, रीजनरेशन आएगा. But if you have a technology available, then you welcome the technology and use it and do it. आज इंडिया 1999 में थी, वहां पे क्या था कि भाई उस टाइम इंडिया इंपोर्ट भी करता था कॉटन, हमारा एक्सपोर्ट नहीं होता था. आज वर्ल्ड को हम एक्सपोर्ट करके इंडिया सबसे ज्यादा विदेशी पैसा का हम बना रहे हो बिकॉज ऑफ कॉटन है, बीटी कॉटन है. सो दिस इज अ रियल फैक्ट. बट अनफॉर्चुनेटली अभी लोग इसको अलग दिशा में लेके जा रहे हैं कि बीटी कॉटन से ये हो रहा है, नुकसान हो रहा है, यील्ड कम हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉट बिकॉज ऑफ द कॉटन और पुअर फार्मर या फार्मर कुछ नहीं कर पा रहा है या वो बंधा हुआ है इसलिए नहीं. यही फार्मर था जो पर एकड़ पे 12, 15, 20 क्विंटल प्रति एकड़ निकलता था. इस साल की बात करें तो इस बार 100 बोल्स आपने तोड़े तो 100 के 100 यही चीज अगर बोलगा 3 रिलीज ज्यादा से ज्यादा 10 बोल्स को डैमेज होता है तो यील्ड डेफिनेटली बढ़ता है, यील्ड डेफिनेटली वर्क करता है. और पंजाब हरियाणा में व्हाइट फ्लाई का ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है, तो व्हाइट फ्लाई के लिए भी आज एनबीपीजीआर ने हमारा नया टेक्नोलॉजी डेवलप किया है. उसके अंदर जो जीएन है TM21 करके आता है, जो फन आता है, जो पौधा उससे निकाला हुआ जीन है वो, और इट्स वर्क्स वेरी नाइस. बट उसको अभी रिलीज नहीं हो पा रहा या वो आ नहीं पा रहा. किसानों के पास टेक्नोलॉजी आता है, बहुत लेट आता है, टाइम पे नहीं आता, इसलिए भी बहुत पैदावार. यही टेक्नोलॉजी आने 2 साल 3 साल के बाद आप देखोगे तो इसको एडॉप्ट किया गया है बराबर. तो वो उससे आज ही क्यों ना कर, वो होना चाहिए. नहीं तो क्राइवन एसी का इसे बीटी कॉटन ऑलरेडी मार्केट में है. अगर हम वॉल्यूम 3 लाते हैं वेब का, सो अगेन हमें जीएसी के थ्रू का अप्रूवल वेट करना होगा या इट कैन इजीली कम, उसमें कोई हर्डल है क्या? जीएसी वो हो गया है. खासतौर पर जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर था जो मॉन्सेंटो था उसने एक्वायर किया. इट्स टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर इज बायर, राइट. सो गवर्नमेंट हैज टू वेलकम टू द बायर बिकॉज वो डोजियर था, वो उन्होंने बैकअप खींच लिया था बिकॉज ऑफ सम कंट्रोवर्सीज एंड दिस थिंग. राइट नाउ अगर उसको वेलकम करते हैं तो ये चांस है कि इंडिया वापस कॉटन में वर्ल्ड में टॉप कर रहा है, आज भी कर रहा है, लेकिन और ज्यादा डबल इनकम उसी से हो सकता है सर. दैट इज ट्रू. तो वॉल्यूम 3 कब तक मिल जाएगा सर इंडिया में, मतलब आपके पास कब तक अवेलेबल हो जाएगा? नहीं, वो गवर्नमेंट जब तक अप्रूवल नहीं देता तब तक हम नहीं कर सकते. ये मार्कर फ्री है, इसमें भी मार्कर हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर इसमें. नो, मार्कर जो होता है वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड डालते हैं, मार्कर उसमें रहता है. हमारे सीड्स में तो हमारी प्रोडक्ट के मार्कर रहते हैं. जैसे मेरी टोटल या वो उसको पहचानना है, दैट आई कैन एंड माय ब्रीडर कैन आइडेंटिफाई. So we will have a last question of this session now from Mr. Narasimha. This question is for Akhil sir. That this is for you. For lettuce said, how to boost the germination? How to germination कैसे बढ़ाया जाए? Lettuce in the seeds of lettuce. जाड़े में सबको प्रॉब्लम होती है. I understood. जाड़े में everyone has this kind of problem because you need to understand कि for the optimum germination what temperature, light and humidity is required. So for germination generally if you are having good quality seed, अगर seed का quality नहीं सही है तो I cannot do anything. But अगर if you are having good quality seed from multinational company, that generally needs a 22 degree centigrade, 20 to 22 degree centigrade, especially in the pro tray.
सो अगर जाड़े में आपका जनरेशन कम आ रहा है तो इज बेटर यू यूज द थर्मल ट्रे, जो प्रोट्रे के साथ एक असेंबली आती है व्हाइट कलर की, अगर आप वो यूज करते हैं तो उससे हमारा रूट जोन का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा। और उसके बाद अगर उस प्रोट्रे में है उसको आप प्लास्टिक की शीट से या पैकेट के अंदर उसको डाल दें तो उससे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो वो भी आपकी जनरेशन में हेल्प करता है। एक बार कॉटिलेडन लीव्स आ गई, जनरली टेक 72 आवर्स, तो 3 डेज के बाद अगर आपको कॉटिलेडन लीव दिख गई तो आप इसी थर्मल ट्रे और प्रोट्रे असेंबली को सनलाइट में रख दें, तो प्रॉपर सनलाइट से आपका जनरेशन फिर सही होगा। So basically the temperature management is the main culprit right now. Thank you very much. So here we will wrap up the session. Before wrapping the session, I would like to thanks to all the speakers, those who have given a beautiful knowledge to us. I am specially thanks to Dr. Akhilesh Kumar, founder, Eden Horticulture Services, Dr. Purushottam Dewang sir, former MD and Chief Scientist Officer, our today's sponsorer, Mr. Girishbhai Patel, Managing Director of AlpGiri Seeds Private Limited. So thanks to all the speakers, participants, और आज हमारे साथ जो हमारे मुकेश शर्मा साहब जुड़े थे उनको भी स्पेशल थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस टुडे। हमारे साथ आज मुकुल त्यागी साहब भी जुड़े थे, श्रीवास्तव साहब भी जुड़े थे, तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस टुडे। Thanks to all the participants, those who are supporting us continuously. Special thanks to our President, Mr. YP Singh Saab, for encouraging all of us. Thanks to INA team. Thanks to everyone. And thanks to Deepak Chatterjee Saab and Manjit Singh Vishal for their kind support in this webinar. So thank you very much once again, and see you in the next webinar. Next webinar jo hai hamara, that is on the next Saturday. That will be on the topic of plants and nursery management. So see you in the next webinar of plant and nursery management. Sure. Thank you very much to all of you. Thank you. Thank you. Thank you, Sachin.